the 18th of August. And an ode to India on the 76th Independence Day anniversary. A 100-member British orchestra plays the national anthem. Good morning and a very happy Independence Day. India is celebrating the 76th anniversary of its independence, and Prime Minister Narendra Modi will unfurl the national flag at Delhi's iconic Red Fort and address the nation in just about half an hour from now at 7:30 a.m. The Prime Minister will unfurl the flag at 7:30 a.m. and then he will address the nation. Cabinet ministers, political leaders, all three service chiefs and bureaucrats are expected to be present for the occasion as they are for every Independence Day. We're already getting live visuals from the Red Fort showing you the gathering that's there to celebrate the Independence Day. Several union ministers, including Union Minister Anurag Thakur, Mr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister, the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena, the BJP National President J.P. Nadda are all there. They've reached the Red Fort for the celebrations of the Independence Day. Prime Minister Narendra Modi will also be there in a short while from now, and he will be received by the Defence Minister, Mr. Rajnath Singh, after which he will unfurl the national flag at 7:30 a.m. and then address the nation. This year, the Independence Day is marking the culmination of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is a government initiative to mark 75 years of independence, which started in 2021. And now we are entering the 77th year of India's independence. Now, for this celebration, several special guests are there for the gathering at the Red Fort. Some of them are there's a bipartisan delegation of US lawmakers that is also expected to attend and hear the Prime Minister's address at the Red Fort. And along with that, there are about 1,800 people from different professions, nurses, sarpanches of several villages, teachers, farmers and fishermen, all of whom have been invited as special guests for the program in line with the government's vision of Jan Bhagidari, according to what the government has said. The celebrations at the Red Fort will be held under tight security, of course, with the deployment of 1,000 facial recognition cameras, anti-drone systems, and over 10,000 police personnel as well. So several important and special guests who are going to be there for the Independence Day celebrations. Along with that, tightened security, CCTV cameras installed as India is going to celebrate the 77th Independence Day and a culmination of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Prime Minister, we can see that the Prime Minister is there at the Rajghat this morning. After this, he will go to the Red Fort. The Prime Minister is at the Rajghat right now. These are live visuals that we're getting you from the Rajghat. And after this, the Prime Minister will go to the Red Fort. So let me just take you through the schedule that we're looking at this morning. But before that, let's just listen in to what's happening. To walk in spite and to walk with insight. That's what makes leading true.
With offerings of gratitude and reverence here at Rajghat, the Prime Minister, taking these feelings, will now move towards Red Fort for the flag hoisting and his address to the nation. बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता ये है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। So as we celebrate our 77th Independence Day today, we also know that this has been a very special year for India at the international stage. India's G20 presidency began on the 1st of December 2022 and will continue till the summit, which is scheduled to be held on the 9th and 10th of September in New Delhi. This, of course, will be the 18th meeting of the Group of 20 and will be the first ever G20 summit to be held in India as well as in South Asia. तेजी से बदलती दुनिया में देशों के बीच रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज की दुनिया में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हितों की रक्षा करना जटिल होता जा रहा है। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और समझाने का प्रभावी तौर तरीका अपनाया है। पिछले वर्षों में भारत के बदले हुए अंदाज के सभी कायल हुए हैं। G20 की अध्यक्षता और मेजबानी भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव की मिसाल है। वर्तमान समय में दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसे मंच और भी खास हो गए हैं। भारत, विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी हुंकार दुनिया भर में गूंज रही है, जो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। G20 अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 विकसित और विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये देश आपसी तालमेल के जरिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से वित्तीय संकट से बचने के उपाय सुझाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण के सभी मानकों का पालन किया जाए, ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो और सभी देशों की आर्थिक प्रगति हो। इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा रहा है। भारत की कोशिश है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। इसके लिए देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन खजुराहो, सूरत, इंदौर, श्रीनगर, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, उदयपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हो चुके हैं। ये बैठकें न केवल G20 को एक नई दिशा दे रही हैं, बल्कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र को गति भी प्रदान कर रही हैं। आज विश्व भारत की संस्कृति, परंपराओं और विविधता को नजदीक से महसूस कर रहा है।
G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक मंच नहीं, अपितु एक नई जिम्मेदारी है। आज भारत का दुनिया पर प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व का भारत पर ऐसा अटूट भरोसा है कि ये किसी भी देश के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ अडिग खड़ा रह सकता है। जब जब भारत आगे बढ़ा है, तब तब विश्व ने प्रगति की है। On the 15th of August 1947, as a jubilant nation stepped into its first year of freedom, with a host of uncertainties about the future, but complete certainty. भागीदारी से हमारा स्वच्छता अभियान एक उत्सव में बदल गया। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले के प्रांगण में आगमन होगा। बिगुल के उद्घोष से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना दी जाएगी। All right, well, good morning. A very, very happy Independence Day to all our viewers, and a very happy Independence Day to you as well, Priyanshi. It's it's an occasion for all of us to really think about our nation, what it means for us. It's a day of celebration, it's a day of thought, and it's a day when we get an idea of what the next year perhaps holds for us and what we've achieved over the last 1 year or so. What you are seeing now are images from the Red Fort, and I'm just going to run through a couple of sequences of the events which are actually going to take place before the Prime Minister arrives and the Prime Minister addresses the nation. Prime Minister Modi speaks at length, perhaps longer than any other Prime Minister in our history. He speaks for upwards of 80 minutes on an average. That should be at about 7:30 onwards when the Prime Minister speaks. But in terms of the sequence of events, the Raksha Rajya Mantri, the Minister of State for Defence, arrived at 7:08. The Prime Minister, the Defence Minister has arrived or is in the process of arriving. He is there, right there. Rajnath Singh, he arrived just a few minutes back at 7:11. 7:18 a.m. and we saw the first glimpses of the motorcade of the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi arriving at the Lahore gate of the Red Fort. He'll be received by the Defence Minister, by the Minister of State for Defence and the Defence Secretary of India. And then he's going to be introduced to the General Officer commanding the GOC of the Delhi area. The Prime Minister will then accompany the General Officer commanding Delhi area of the Indian Army and proceed towards the saluting base, the saluting dais. At that time, the Defence Minister, the Minister of State and the Defence Secretary return to the well of the rampart of the Red Fort. These images give you a long shot of what we are talking about. It is an absolutely lovely day with the Prime Minister just about arriving at the stage. While the Defence Minister and the MOS go to the rampart to receive the Prime Minister, the Defence Secretary will wait for the Prime Minister at the foot of the stairs of the rampart. In case you're just tuning in, this is Prime Minister Modi arriving now at the Red Fort. There will be a ceremonial guard of honor which he will participate in a little while from now, but a lot of other events as I've been outlining for you. So ultimately the guard commander will lead the Prime Minister for inspection of the guard of honor. I was referring to that. After that inspection, the Prime Minister and the General Officer commanding proceed towards the foot of the lift which actually takes them to right up to the area from where the Prime Minister addresses the nation, the ramparts. The Defence Secretary along with the Prime Minister reach the rampart by the lift and stairs, and it's from the ramparts that he addresses the nation. The Prime Minister will be received by the Defence Minister, by the MOS, Defence, Minister of State, the Chief of Defence Staff and the service chiefs once he goes up through that elevator to the ramparts of the Red Fort. He'll proceed towards the rostrum along with the General Officer commanding and several others, and the Defence Secretary will then proceed to their seats, and at 7:30 a.m. that's
just about 27 minutes from now, the Prime Minister will unfurl the national flag. The guards present the national salute. The band plays the national anthem. A 21-gun salute is fired. So the Prime Minister just about arriving now. Let's just listen in to what's taking place at the Red Fort. थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामाने द्वारा रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलाट सलामत जस। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड पंजाब जस। श्रीमान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। Major Vikas Sangwan announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. And when the inspection begins, the band position there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place, and then the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर Dignitaries,
in the VIP enclosures, awaiting the arrival up to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the three service chiefs greeting the Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर पर। प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर, राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर, उससे जुड़कर। The people of a democracy, its engines, its driving force, a sampling of right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate her 77th Independence Day. In the India That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. Good morning and welcome, and a very happy Independence Day to all our viewers from Priyanshi and me. It's a fantastic day for all of us. It's all going to be starting in terms of the Prime Minister's speech. In a few moments from now, the Prime Minister is now going up to the ramparts of the Red Fort. The inspection
is over of the armed forces assembled over there. The Defence Secretary along with the Prime Minister and the General Officer commanding of the Delhi area are now at the rampart. They're going up the lift. The Prime Minister, once he arrives at the rampart, will be received by the Defence Minister, the Minister of State for Defence, the Chief of Defence Staff, the service chiefs. He then proceeds towards the rostrum with the General Officer commanding Delhi area and several others. The Defence Minister and some of the others will then proceed to their seats. It's at 7:30 a.m. So just a little while from now, 3 minutes from now, that the Prime Minister will be unfurling the national flag. The guards will present the national salute. The band plays the national anthem. A 21-gun salute is fired. What an incredible day it is for us. An occasion to think about what India, our India, means to us. What's happened over the year gone by, some of the biggest achievements, the biggest challenges that we need to address, and what the future holds. So let's just go back, listen in to the live feed on Doordarshan coming in from the Red Fort as the Prime Minister gets set to address India. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर पर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामत, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहां ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। यहां उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का,
जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the National Flag Guard marching off, commanded by Major Abhinav Detha. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश, कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश
बड़े धाम-धूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई हो। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए
उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डायवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या
दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है, और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है, और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है, और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था, और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक सीमित नहीं है। भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर 2, टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है। वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी डिवाइस। अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं? झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं।
छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही है। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं, बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन, 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है।
उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे। बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर क्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई, जनता की भलाई के लिए लगा रही है
और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरी करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर कोई एनालिसिस करेगा ना तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं।
और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से
50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती है उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं,
अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट
समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया। दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है। निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो,
ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले। ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारत विविधताओं से भरा देश है। असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे हैं। अब हमें रीजनल एस्पिरेशंस को, संतुलित विकास को बल देना है और रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत मां का कोई, हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा। हमारा शरीर का कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ करके हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशंस को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसलिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है। हमने उन सारे को आधार पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के जब मैं एकता की बात करता हूं तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं।
मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने, आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बढ़ दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है, अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज
अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है। अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बॉल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात और भारत ने अब उस दिशा में ध्यान, और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है, उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसलिए कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है।
जो वैश्विक समुद्रिक शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है। और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है। लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में
और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली।
इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, यह हमारा गुनाह है। यह हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं उठ सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य,
आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है। ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राय नहीं। चुनो चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृतकाल हम सबके लिए कर्तव्य काल है। ये अमृतकाल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था, उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में
देश के लिए मरने का मौका नहीं है, लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. Well, good morning and welcome. A very happy Independence Day to all our viewers. We've seen the Prime Minister speak for the last hour and a half, his speech to the nation from the ramparts of the Red Fort. Several important points. He's spoken extensively about development in the country, India's aspirations. He's spoken about present concerns, and he's spoken also about political issues in the run-up to the next election. So let's just quickly go through some of the key points. In fact, right up on the top of his address to the nation, he spoke about the violence in Manipur in the northeast. He spoke about many deaths having taken place. He spoke about news now of peace for the last few days. He said that people of India are with the people of Manipur. We need to extend the process of peace. The state and the centre must deal with all the issues and keep trying. A new international confidence on India's achievements. He spoke about that extensively. The entire world is now more confident in India. We have demography, democracy and diversity, a triveni of these three. This will help us achieve our dreams. People are aging elsewhere. We have a young population. People under the age of 30. India has the highest numbers in the world. He spoke about various aspects of India's development. He spoke of India's startup ecosystem. He spoke of the G20 summit, the last one, in Bali, where many nations asked him about India's digitalization, the digital India that he speaks about frequently. And India is the president, of course, of the G20 this year. We'll have several world leaders arriving here in September. And people, the Prime Minister said, had been exposed to the diversity of India through the G20 process over the last 1 year. It's not just the heads of states who will be arriving next month, but it's been a process over the last 1 year. There have been hundreds of meetings which have taken place.
Science, technology, the construction of satellites, these are areas that the Prime Minister spoke about. He spoke about India's achievements. He had a message to young people in the country. India will back your ambitions with opportunities. The country is on the path to progress. This is the work, the Prime Minister said, of our farmers and of our Mazdoors. There are new geopolitical equations. India has a key role in reshaping the world. He told people that you are at a decisive stage, and India is now the global South ki awaaz, the voice of the global South. He spoke about India being a key part of global supply chains. Nation first, Rashtra Pratham. This was perhaps the guiding vision of the Prime Minister across his entire speech. He then spoke about India in the past and India present, and by past referring to 2014, where he said that he formed a government in 2014 and then re-elected this government in 2019. He said that Modi, speaking about himself, his government, Modi reformed India. The bureaucracy performed and showed us the transformation. Reform, perform and transform. Again, 3 mantras, another set of 3 mantras named by the Prime Minister. Again, talking about the past and the present, he said 2014, India was the 10th biggest economy. In 2023, we are now the 5th largest. I think he said 13.5 crores, I'll have to double check that number, have come out of poverty in a finite period of time. There are new schemes that he announced, not as much as we've seen in the past, but he did say that there'd be a scheme to help people construct homes. He mentioned that India has the cheapest internet costs in the world. Efforts are on to keep broader macroeconomic expenses under control despite global pressures. He's spoken about India's clean energy mission, renewable energy, green hydrogen, deep sea missions, modern trains, bullet trains, roads to villages, electric buses, metros, quantum computers, nanotechnology and semiconductor technology. These were areas that he said were areas of achievement for India, which is what he referred to. Repeatedly in his speech, he spoke about 2047. Remember, that is a goal that we've set for ourselves to become a developed country. He spoke at length about women-led development, women scientists in the Indian Space Research Organization, more women pilots in India than perhaps any other country, how women's self-help groups could work to further India's drone ecosystem. He believes that drones will play a large role towards infrastructure development, multiple uses in the future. He referred to India standing internationally by speaking briefly to the presence of US congressmen who are present at Independence Day. I think 8 of them are present, cutting across party lines. Again, referring to renewable energy again, he spoke about the International Solar Alliance. He's spoken about disaster-resilient infrastructure, something which is very important given the concerns that we are seeing about extreme weather events linked to climate change. And then he spoke at length about along political lines, and these were all important messages. He spoke about India seeking independence against corruption. He listed 3 key areas that India needed to fight against. Number 1, a war against corruption. He said this was a commitment of Modi. I will keep fighting a battle against corruption. Number 2, dynasty politics. He spoke without naming the Congress, but of a party of the family, by the family, and for the family. And then he referred to the politics of appeasement. Finally, coming to the end of his speech, he said, I am your Sathi, your Sevak. The dreams of our independence struggle are alive. So the Prime Minister speaking to begin with on concerns that the nation had faced. He then went through the achievements that India has made. He spoke about the future of India. He spoke about development through various paradigms, not just development within India, but how the world saw India. He spoke about India's presence in the international community, how geopolitics are changing and where India is now positioned, how countries around the world are now seeing India. And then he spoke very sharply about
what can be said are political issues which he raised. Remember, this is the run-up to the national elections. He spoke about a war of corruption. He said this is a commitment of Modi. He would keep fighting against corruption, dynastic politics, and the politics of appeasement. He said these are areas that need to change, and that he remained absolutely committed to ensuring that these were fixed. Let's just go back full frame to the images from Red Fort, where the Prime Minister, per tradition, is engaging or interacting with several children who've been part of some of the functions over there, having a chat with them. This is a huge occasion for these kids. They've been waiting out in the sun for a long time, and here they have a chance of speaking to India's Prime Minister. Special memories in their hearts. देश के कोने कोने से ये एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुंचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनकी यही खासियत है, देश के सर्वोच्च नेतृत्व का युवा शक्ति से सीधा संवाद, अनुशासन बनाए रखना है, साथ ही साथ बातचीत भी करनी है, इंटरेक्शन भी करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। एनसीसी की जो तीनों विंग्स हैं, उसमें देश के कोने कोने से 1100 कैडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। ये सभी कैडेट्स प्रशासन की सीमा के साथ अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर का जो उत्साह है, जो आह्लादित महसूस कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद शब्दों में उसे बयान करना मुश्किल होगा। यकीनन इन सभी के लिए एक बहुत ही यादगार, कभी ना भुलाने वाला, अविस्मरणीय मौका। एक शब्द है कनेक्ट, जिसको हम अब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ जिस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं, वो बहुत सीखने लायक भी है, और वो एक बिल्कुल अद्भुत सा क्षण होता है। इन सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए, जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, ये एक ऐसा मौका जिसकी कल्पना अक्सर करना मुश्किल होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हों। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद जोश, उत्साह और ऊर्जा, वो सब और इन किशोरों के साथ वो और बढ़ती हुई और सब तक पहुंचती हुई। Absolutely. In fact, the beauty of youthful spirit is that it's infectious. So the Prime Minister also getting a spring in his step. There's a lightness of being. And there is, of course, the joy of connecting. A special quality, a special leadership quality exhibited here. अब प्रधानमंत्री उस दीर्घा की तरफ जा रहे हैं जहां विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया, और आज वो इस समारोह के साक्षी बने। ये खास मेहमान, उनकी संख्या लगभग 1800, अलग अलग क्षेत्रों से समाज के, उन सब से अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस सबको एकता के सूत्र में। And as the Prime Minister continues with these close interactions, we can see across all age groups patience, forbearance, love, all in different capacities being exhibited here. We step into our 77th year of our independence, and the completed figures of the decades gone by as a free nation. There is also a great responsibility that rests on our shoulders. And in moments like these, in moments of festivities, in moments of interaction,
We also reflect often, have we achieved what we envisioned for ourselves? Yes, we have in many ways. Have we made progress? Have we managed to ensure that the most needy have also been included? Attempts are definitely on. And the times are changing so rapidly, and the relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical, and India is on the cutting edge of that movement. कोई उन्हें मिलना चाहता है, कोई उन्हें छूना चाहता है, कोई उन्हें कुछ भेंट करना चाहता है, और अधिकतर लोग अपने कैमरों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। ये उनके लिए एक ऐसी पूंजी है जो बेशकीमती है। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि वो एक एक व्यक्ति से मिलें। अद्भुत दृश्य, इनका आनंद लीजिए। The meeting of hands, the meeting of hearts, the meeting of people. Red Fort today witness to some very precious moments for a diverse lot of people. Extremely happy that they came here in person to attend this ceremony. जनमानस का, जनसमूह का इंतजार मानो फलीभूत हुआ है, और जो प्रतीक्षा की घड़ियां थीं वो समाप्त हुई हैं। शायद आज बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सभी शायद सेल्फी चाहते हैं, यादों के घरौंदे में संजो रखना चाहते हैं इस अवसर को, इस मकाम को, इस मौके को। All right, a very happy Independence Day to all our viewers. We're seeing the Prime Minister, his speech between 7:30 and 9 a.m. this morning. We've gone through several of the main points. I'm going to repeat many of those points, but that's after a short break. The Prime Minister getting set to depart the Red Fort. He's met many of the children over there who have been waiting very patiently for that opportunity. He interacts with them after a speech every year. But there's so much to discuss in terms of what the Prime Minister had to speak about. At one level, it was about India's development, India's international standing. He referred to the violence in the northeast, but also very direct political points in this political year. We'll talk about all of that. That's coming up. In the India NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and
It's happening. Not in some far off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai? Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है। तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." Good morning, welcome, a very happy Independence Day to all of you, your family, your friends, to everyone in India and around the world. The Prime Minister has spoken at the Red Fort. Here are a couple of main points that
Prime Minister Narendra Modi spoke about. I'm going to summarize the key points, which looked at development concerns that India faces right now. He spoke a great deal about India's external presence, our international presence, but also very sharp and hard-hitting political points in the run-up to the elections. But he began his speech right up the top with mention of Manipur, the violence over there, many deaths. He spoke about how there's news now of peace over the last few days. He said that the people of India are with the people of Manipur. We need to extend the process of peace in the state. The state of Manipur and the centre must deal with the issues and keep trying to ensure that there is a lasting peace. He spoke about a new international confidence on India's achievements, how the entire world is now more confident in India. We have demography, democracy and diversity, a triveni of these three, which helps us achieve our dreams. People are aging elsewhere. We have a young population. The Prime Minister referring to India's demographic dividend. India is the world's most populous nation, but that comes with a huge set of benefits. People under the age of 30, we have the highest numbers in the world. The Prime Minister spoke about India's startup ecosystem, about how that could potentially generate a lot of jobs for people in the future. He spoke about the G20 summit in Bali last year, when many nations asked about India's process of digitalization. This year, of course, India is the G20 president, and people have been exposed to the diversity of India through the G20 process over the last 1 year. Remember, heads of state will be coming to India next month, but the G20 process is extended for a period of 1 month with hundreds of meetings having taken place. Science, technology, the construction of satellites, examples of India developing. The Prime Minister had a message to young people in India that the country will back your ambitions with opportunities. India is on the path to progress. This is as a result of the work of our farmers and Mazdoors. There are new geopolitical equations, is what the Prime Minister has spoken about. India has a role in reshaping the world. We are at a decisive stage. Global South ki awaaz, global supply chains, India is a key part. But I think perhaps the overriding theme of what the Prime Minister said was on the importance of nation first and of Rashtra Pratham. And then political points, key ones. You formed a government in 2014 and 2019. He spoke and he said Modi reformed India. The bureaucracy performed and showed us a transformation. Reform, perform and transform. Again, three words that the Prime Minister referred to. In 2014, India was the 10th biggest economy. In 2023, we are now the 5th. He spoke about how crores have come out of poverty in this time period. There weren't very many schemes, unlike in the past, which were announced, but he did announce a scheme to help people construct homes. He spoke about the internet and how we have the cheapest internet costs in the world. He spoke about India's renewable energy mission, green hydrogen, deep sea missions, modern trains, bullet trains, roads to villages, electric buses, metros, quantum computers, semiconductors and nanotech. In 2047, referring to all of these, he spoke about how that would help India achieve our goal for being a developed nation by 2047. He spoke about the role of women extensively and women-led development, Indian scientists who are women, more women pilots in India than perhaps any other nation. He spoke about the presence, again referring to that international angle, of how several US congressmen were present during this Independence Day celebration. And then the key political points. Independence against corruption. Firstly, there were 3 points. A war against corruption. He said this is his commitment. He'll keep fighting this battle against corruption. He hit out at dynastic politics and parties which engage in that. He spoke about a party of the family, by the family, and for the family. He spoke about the politics of appeasement being a problem in India. He said, I am your Sathi, your Sevak. The dreams of our independence struggle are alive. And then very significantly, one of his last points, we will come back next year here if your blessings are with us. So a direct message over there to the electorate. Let's listen in to what the Prime Minister said. लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ,
लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। All right, so let's just go through some of the points that the Prime Minister has been speaking about. Manisha Priyam, Smita Gupta and Maya Sharma with us. A very happy Independence Day to all of you. Manisha, let me come to you first. How did the Prime Minister balance talking about India, our development goals, along with a very clear political statement? The political statements came very clearly towards the end. But I did think there was a strong pitch about Modi himself, Modi and the world. विश्व में भारत कहाँ है, विश्व में हम कहाँ रहेंगे, दुनिया हमें कैसा मानती है. So भारत की वैश्विक छवि, how we appear to the world, how the world looks at us, I think that portrayal was important. The second important thing was 100 years after independence. Remember, Modi shifts the goalposts. Now from Amrit Kal, you move to talking about 2047. But most importantly, when he said that from the Red Fort, he's given the political mantras, and those political mantras that he says are no parivarvad, no tushtikaran, and the third one, forget what it was. Dynasty politics, a war against corruption, dynastic politics, and the politics of appeasement. Three key political points. Three things. So now these are the three things that he said. This is a one-way talk. The fact is that, you know, politically, his party has aligned in Maharashtra, especially with those Mr. Modi called corrupt just about a couple of days ago. So yes, but he's saying this is his personal fight. Modi kabhi nahi rukega. So he's saying this is his personal fight. There may be political alliances that are made, but it will be his personal fight. So I think the final message has been that these three elements of politics are Modi's personal mantra, Modi kabhi nahi rukega. So I see this speech personally as a distinct shift from most others, that he's given very eloquent speeches, long speeches, he doesn't stop, of course, replete with all of the achievements, the way he's able to tell you about everything he's done. But I think these are the three highlights. Modi himself talking about a value-based mantra of his politics. I think that's the last and final message. Absolutely. And, you know, it's not just about a leader speaking about himself. In this case, talking about himself, what he has achieved, is part of a political pitch, one would suggest, where he is, of course, the largest face in the BJP, you know, positioning himself once again, reinforcing the image of him being the dominant leader as the BJP tries to come back to power. In fact, Maya, if you can take that next point, one of the last remarks made by the Prime Minister, will come back next year here if your blessings are with us. It doesn't get more direct than that. Absolutely. Next year is the year of the big election. And Prime Minister Modi did not use this opportunity, the very last Independence Day speech before that big election, to remind people that they have a choice to make in the coming year and a pitch for them to actually bring him back so that he's back on the Red Fort next year at the same time. So yes, it was a very direct appeal, referring to the elections, referring to bring me back. I hope you'll bring me back. This is all I've done for you. But also, there were not that many major announcements, considering it is the last Independence Day speech before the election year. In past years, of course, he's announced very major schemes, very major benefit schemes or government schemes that have really been big ticket. That was a surprise that this time, even though we're going into the election year, he didn't really talk about any major plans, any major developments in terms of welfare schemes. It was more generic, I felt. There were not some of the big ticket items that had been announced in earlier years. We were perhaps expecting some major announcements going into the elections, but that didn't happen. But yes, certainly an appeal for the elections, ahead of the elections.
indirect attack, or direct attacks also on the opposition, talking about issues which he feels might appeal to the people when he's talking about corruption, dynasty, and appeasement without naming any political party, definitely trying to set the political agenda, and a very direct appeal, as you said at the end, vote me back into power is what he's asking for. But surprising again that there were no big ticket announcements this Independence Day. Smita, in as much as we've spoken about the politics, and we'll come back to that in a moment, showcasing India's international achievements, whether it's G20 in Bali, G20 now, speaking about changing geopolitics, India being in the center of that, how countries around the world see India. Is that unusual for Independence Day speeches, the priority given to India's international image? Smita, go ahead. Can you hear me, Smita? I don't think she can. Manisha, would you like to take that? You know, I think the pitch is very, very important. Modi is now talking about the fact that he's made many developments. And he's confirming that by saying that, look, we are already amongst the 5th largest economy of the world. And we will now be, the horizon will be that we will now be a developed nation. And he is, as I have told you, he is standing amongst the Committee of Nations and saying many things. We said this to the world, and the world heard us. After Corona, what we said to the world, one world, one health. So he's using the pitch of his now having become a global leader. He's not just a primus inter pares, not just a first amongst equals, but he is by far the most unparalleled individual political leader with a global reputation going into the competition for 2024. There is just no match. There is just no one anywhere near him with that cutting edge. So I think the global image portrayal, India in the world, how it looks at India, and Modi giving these slogans to the world, and the world now finally understanding what we told them they now understand. Also, his personal emphasis, as you could see, on Ayush Yoga very much remains. The image of India that he wants to portray, but not just these. The fact that he's saying that women are now in STEM, we are doing nanotechnology. So he's not selling the idea of a snake charmer's India. He's selling the idea of a developed India that does science and technology, where women are taking the lead in these areas. But of course, he remains the prime brand ambassador for a globalized India that's not just a market for the developed countries, but it is, he posits it from the Red Fort that he's taking forward an agenda to the world. Okay. And I will see this as an important pitch, because remember, he has to, pose himself as that leader who's a cut above all other regional leaders. And I think his positioning in global affairs, his positioning as a man of science and technology, his positioning as a man who believes in an ecologically conscious world and environmentalism, I think these are aspects of his personality that have been accepted by the world. All right, Manisha, lots of points that you mentioned over there. We do need to take a short break at this stage, and we'll come back with Smita and her assessment of some of the key points that he's mentioned. There are so many points. We'll talk through a few of the other ones. That's after this break. Happy Independence Day to all our viewers. Car insurance. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow!
Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है। तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people.
watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Welcome back and a happy Independence Day to all our viewers. Let's go back to Smita Gupta for her look, her take at the Prime Minister's fairly expansive speech. Smita, what were some of your key takeaways? Hello. Yes, Smita, go ahead. All right, once again, apologies. We've got more technical problems with Smita, but I'll tell you what we'll do. It is a time for us to honor and to remember every aspect of Independence Day, and that of course means our national anthem as well. There's been a remarkable performance by the multi-Grammy award-winning Ricky Cage. He's performed with an orchestra in the United Kingdom, in London. Let's just listen in to this incredible rendition of India's national anthem. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable.
we're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on.
This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Prime Minister Narendra Modi delivers his Independence Day address from the Red Fort, a 90-minute speech setting the tone for the BJP for 2024. The Prime Minister says, I'll be back at the same spot on 15th August next year. The Prime Minister begins his speech with the issue of the Manipur violence, says the country is with the people of Manipur, and the centre and the state government both are working together to restore peace in the state. Prime Minister Narendra Modi attacks the opposition during the Independence Day address without naming the Congress party. The Prime Minister hits out saying party of the family, by the family and for the family, and corruption, dynasty and appeasement are the three main hurdles of the country. The Prime Minister lauds the Indian economy during the address. He says India will be among the top 3 economies in 5 years, as has been previously predicted by the IMF as well. He said India, the aim is to make India a developed country by 2047. An Independence Day rush seen at the Srinagar Stadium. Government employees attending the Independence Day function, while the internet shutdown and mobile and other restrictions have also been lifted. No restrictions in Kashmir today.
In 24 hours, over 50 people dead in landslides and cloudbursts due to Himachal Pradesh's heavy rainfall in Shimla. A railway track hangs in the air after a landslide washed the land under it. Heavy to very heavy rainfall predicted till 18th August. A very happy Independence Day to all our viewers from all of us at NDTV. India is celebrating the 77th Independence Day and the 76th anniversary of India's independence. And Prime Minister Narendra Modi this morning delivered his customary address at the Red Fort, and he started his speech with the issue of Manipur. He said that the country stands with the people of Manipur and the central government and the state governments are working together to restore peace. So while we are celebrating Independence Day, one important issue on all minds is the Manipur violence that has been continuing for over 3 months and close to 150 people have died. So the Prime Minister said they are working to restore peace there. On the other side, the Prime Minister, of course, used this stage to hit out at the opposition because it's the run-up to the 2024 elections. The Prime Minister hit out at the opposition and conveyed his confidence about returning as the Prime Minister in 2024 as well. Listen in to the highlights of the speech. लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार में दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है ये। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा।
Now, to understand the Prime Minister's speech even further, we have guests joining us on the broadcast, along with my colleague Megha Prasad, who's also joining us. And Megha, we heard the Prime Minister's speech there, and of course, it's the Prime Minister's customary address for the country on Independence Day morning. But along with that, we could see that as it's just a few months to go to the 2024 elections, you could see some bits of an election speech also being made there. Well, yes, Priyanshi, you are not wrong when you say that. But I think his, an hour and a half long speech did contain a lot many other things. So yes, while one would want to connect it with the upcoming elections, be the state or the general elections next year, I think he ended on the note where he sought the blessings of people, saying that, if you do bless us, then I'll be back again next year here, taking you through what he believes is going to be a golden period for India starting now. But I think, the other important highlights of his speech were him talking about the trinity of democracy, of demography and diversity, which is what he said is going to influence the world in the days to come. He also talked about how India's achievements, of course, achievements of his own government over the last 9.5 years, listing them out, but also saying that India has, now found its place that it deserved for a very long time internationally, and how our country has led the world in many different facets, whether it is about climate change, whether it's about solar power, so etc., renewable energy. So he did talk about all of those issues. And I think underlying, of course, was, the part where he hit out at the opposition, saying that 75 years, the past 75 years, first 75 years since the independence, our country has had to deal with issues that actually inherently became a part of our system, which was, of course, corruption, dynastic politics, appeasement politics, and that we got to fight against it. He said, it's a personal fight for me, and I will continue with that. But as a country, we all need to strive to ensure that we free ourselves and our nations of those evils, because we need to progress. And India has to have a rightful place when it comes to the international standing. And we need to be one of the leaders. He talked about 2047, said, when at that time, at the 100th year of India's independence, when we unfurl the national flag, we got to be at the top of the list of the countries around the world. Megha, thanks very much for joining us with those details and for breaking down the highlights of the Prime Minister's speech. We also have guests joining us on the broadcast. Mr. Amitabh Tiwari, a political strategist and commentator. We also have Major General Dr. G.G. Dwivedi, retired, who's a defense and national security expert and a war veteran as well. We also have Sanjay Singh, who's a senior journalist, also joining us on the broadcast. Thanks very much, gentlemen, for joining us. And let me first start with you, Major General G.G. Dwivedi. It's great to have you on the show. And my first question to you, that the Prime Minister, one of the important and first issues that the Prime Minister started his speech with this morning was the Manipur issue. While there have been several questions and demands from the government to make significant changes, the Prime Minister said that the central and state government are working together. So what are your thoughts on the comments made on Manipur? And do you think they are enough for what Manipur needs right now? Well, Priyanshi, first and foremost, my heartiest felicitations to the team NDTV, my fellow panelists, and of course, my fellow citizens. It's a great day for us, and we are very proud to be on your show and discussing the issues which are of very important nature to the country in light of the Prime Minister's speech. Now, coming firstly to your question of Manipur, well, as someone like me who did 4 tenures in Northeast, and I commanded my division in Manipur and Mizoram. So therefore, I have a very personal insight, and more than that, I have a lot of sentiments for the Northeast region and Manipur in particular. Well, let's first state what Prime Minister actually covered in his speech. Yes, Manipur is a national concern, and what happens, in fact, in any part of the country is the call of the nation. And what he said is that Manipur is now being handled by the state and by the central government, and things are looking up. But going a little deeper as to what exactly happened in Manipur in last 102 days, well, it is a catastrophic situation, should not have happened if we follow what the sensitivity of the Northeast region and Manipur in particular. It has a history of clashes, of violence,
And I think situation could have been controlled earlier if all the elements of instruments had come into play. But that unfortunately not happened. But there's no point now going to the past. It's best to look into the future. Yes, Manipur restoration normalcy is slowly limping back, but I like to caution here that should be taken as a temporary lull because things are still very critical, especially the villages are fortified. About 5,000 arms are with the villagers. And today, the biggest challenge is to disarm, bring trust, and get the administration into the place. And I'd like to make two important points. See, Manipur should be seen in the larger context. We have a hostile neighborhood, China, Myanmar, and then more importantly, there have been interference from the across into Manipur. Therefore, Manipur need to be handled with a greater sensitivity, and Prime Minister has given assurance, and we believe our Prime Minister. Right, so we hope that it goes beyond the assurances also, and we see actual change in Manipur and normalcy returning. The Prime Minister did say that for the past few days, we have seen that there have been no instances of violence lately. So we hope that that is maintained and Manipur returns to normalcy soon. We're also joined by Smita Gupta, who's a senior journalist, also joining us. And Smita Gupta, while we've spoken about Manipur as we celebrate independence, that's an issue that needs to be addressed. But on the other side, the Prime Minister also extremely confident about returning to the same Red Fort, giving the same speech next year on August 15. So setting the tone for 2024, at least for the BJP? Absolutely. I think this was more of an election speech rather than the speech of a Prime Minister. It was of a Prime Ministerial candidate rather than the Prime Minister of the day. The fact that he said that he was going to give the same speech, a similar speech next August, demonstrated his confidence. Like in many election day speeches, many previous election day speeches, he again stressed the changes in his governance, which he said ushered in an era without corruption. In 2018, a year before the last general elections, he announced an ambitious health scheme, Ayushman Bharat. This time he announced the Vishwakarma Jayanti, which is targeted at small OBCs. He didn't say exactly how much money he was going to put into it, but he did refer to it as a very, very big scheme. He also referred to the three dangers to the country. Again, he highlighted corruption, he highlighted dynasty, and family-based politics. That means it was a direct attack at the Congress party, the Samajwadi Party, the DMK, and he also talked about appeasement politics. And let's also get in a word from Mr. Sanjay Singh on the political bit, Mr. Singh. When the Prime Minister talked about dynasty politics, talked about corruption, he didn't name a particular party, but the attack is clearly on the Congress. See, I would differ a bit from the analysis and argument that this was an election speech and not speech of a Prime Minister from ramparts of Red Fort. See, this is last term last year of his second term in office. But the fact remains that we are going to elections, so we are, as journalists and otherwise, we connect things with 2024, and to an extent, rightly so. But to attribute to an election speech, I think would be a bit of injustice to his speech. The three things, the three termites that he referred to, that is corruption, that is dynastic politics, and appeasement politics. These are the core which he has been saying also when he is not speaking from Red Fort. He has said all these things in past. He also turned around the kind of guarantees that Congress party and some other political parties were giving in terms of freebies. He turned that guarantee into, previously he said this is Modi's guarantee that in his third term, India would be third largest economy. And today again, he said about guarantee that this is my guarantee that I'll continue to fight against evils of corruption. There is no doubt that these three things actually are at the root of so many problems in the country. Nobody can dispute that. He, of course, targeted, by saying so, he targeted some political parties, including the Congress. And most of regional parties, barring exception of BJD and JDU,
And naturally, if you look at it, barring the left parties and the BJP, right, in the leadership scheme, all political parties are dynastic political parties. Right. So And there is while you more. mentioned the guarantees the Prime Minister made, Mr. Singh, I want to come to Mr. Amitabh Tiwari on that. And the Prime Minister guaranteed some things, that the country is going to be the third largest economy by the end of the decade. And he also said that we are going to aim to make India a developed economy by 2047, along with other guarantees. But don't you think that more of these guarantees have been made in the past by the Prime Minister as well? So which are the new guarantees that have been made in this speech? No, see, what is different in this speech is that while a lot of guarantees have been made in the past as well, some of them have been realized. Correct. So the confidence with which the Prime Minister has been oozing that he is going to be back to power or back to the Red Fort next year is coming entirely from that. And the fact that the India is going to be the third largest economy in his third term in the next 5 years is also acknowledged by IMF. So it's not something out of the blue, because if we just simply grow at 6 to 7% per annum for the next 5 years, right, we are going to reach that level. Right. So what he's showing is that a vision, he is different from others in a sense that he has achieved what he promised, achievement on national security, lifting the poor, having a strong international image, right, grand development, etc., etc. Right. And he is also listing the challenges. Of course. As we look back, we have to look at the achievements, but we also have to look at the challenges. Thanks very much, ladies and gentlemen, for joining us and for really breaking down the Prime Minister's speech's highlights and the challenges that the country faces for the coming few years. We'll take a short break now. News continues on the other side. Do stay tuned. दुनिया में कुछ लोग NDTV News Network that informs, inspires and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पेन, ग्रीफ ऑफ समवन एल्स, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show,
but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary. Welcome back. Here's a special ode to India on Independence Day. A 100-member British orchestra played the national anthem, and the rendition was released by three-time Grammy Award-winning musician Ricky Cage. Take a look. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai? Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं. The
The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पेन, ग्रीफ ऑफ समवन एल्स, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और सभी दर्शकों का स्वागत है। एक खास स्पेशल इंटरव्यू सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज़ादी की सालगिरह के मौके पर। और ये इतना बड़ा मौका है 75 साल पूरे कर लेने के बाद कि इस वक्त के हमारे हिस्ट्री के जो बहुत ही क्यूरियस ऑब्जर्वर्स हैं, जो पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक, गवर्नेंस और सारे मुद्दों पर नज़र रखते हैं और बड़ी मजबूत राय रखते हैं, जिससे कि ओपिनियन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी इम्पैक्टेड होते हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश साल्वे साहब से इस इंटरव्यू में। उनके परिचय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले सॉलिसिटर जनरल थे। इस वक्त दुनिया और देश के बड़े बड़े केस मुकदमे जो होते हैं और रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, उसमें उनका बड़ा भारी रोल रहा है। साल्वे साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आज़ादी की सालगिरह के मौके पर पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप लंदन में बहुत वक्त गुजारते हैं। इस वक्त भारत का जो इमरजेंस हो रहा है, उसके बारे में दुनिया हमको किस नज़र से देखती है, और हमारी इस राइजिंग जो कहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जिसमें कि इंडिपेंडेंस एक बहुत मजबूत पिलर है, हमारे बारे में क्या समझते हैं लोग? इसके दो पहलू हैं संजय। एक तो यह है, जैसे मैंने किसी दूसरे चैनल पे उस दिन कहा था, पहले लोग देखते थे तो कहते थे ओह ही इज एन इंडियन। अब लोग देख के कहते हैं ओह
यू आर एन इंडियन। तो ये एटीट्यूड चेंज हो गया है। आज लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं इंडियंस को। ये जो था कि ये गरीब देश के, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कौन है ये, और ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, ये 180 डिग्री टर्न हो गया है। अब ये हो गया है कि वो देश हमारे की तरफ देख रहे हैं कि भैया हमारे साथ बिजनेस करो, हमारे को बिजनेस दो, हम लोगों की हालत पतली है, आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप नया इकोनॉमिक पावर हाउस है, और आपके साथ हमारे को रह के साथ मिल के काम करना है। तो इससे जो ये क्वांटम चेंज आया है भारत की इमेज में, ये बहुत अहमियत रखता है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे कि इंडिया को लोग किस तरीके से देखते हैं। हर सुप्रीम कोर्ट का जो एक वक्त होता है उसमें वो अपने को डिफाइन करता है कि वो क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। तो इस वक्त का जो माहौल है उसमें जो टॉप जुडिशरी है वो उसका फोकस क्या आपको लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो पब्लिक फेसिंग मुद्दे हैं उस पर कोर्ट बहुत प्रोएक्टिव है, और जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आप कुछ लोग इक्वल हैं, कुछ लोग ज़्यादा इक्वल हैं, किसी के लिए तो बहुत कुछ पेंडिंग है और किसी के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। तो इस वक्त कोर्ट के कॉन्डक्ट पर आपको क्या कहना है? देखो, एक तो हमको ये पहले सोचना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये इंस्टीट्यूशन क्या है। ये बाकी जैसे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है या बाकी यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यही हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट है। इसके जैसे कोर्ट है जिसमें सिर्फ लीगल मुद्दों का सॉल्यूशन होता है, या ये सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट स्टॉप शॉप है कि जिसको लगा, जिस आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा और सरकार ने जो किया उसको पसंद नहीं आया, वो पीआईएल लेके पहुंच गया। तो ये एक हमारे कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया है। अब इसके कारण दो चीजें होती हैं। एक तो आप एक एस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हो जो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, और इसलिए अब आपको देखो थोड़ा डिसइंचार्टमेंट हो रहा है लोगों को कि अरे कोर्ट को क्या हो गया, कोर्ट तो सरकार से दब रहा है, हर मैटर में कोर्ट सरकार के फेवर में जा रहा है, क्योंकि एक आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लिया। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर पे, और मैं ये हमेशा कहता हूँ एक चीज इंडिया में अगर बहुत डीपली फ्लॉड है तो ये जजेस की अपॉइंटमेंट, यानी जजेस ही जजेस को जज बनाएंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये अनहर्ड ऑफ है और इसको खत्म करना चाहिए। सालवे साहब, ये कंपेलिंग प्रॉब्लम है, बहुत बरसों से बात हो रही है इस पीआईएल इंडस्ट्री की, जिसमें हमको पता है बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं प्रोसेसेस का, लेकिन इसमें करीब करीब जब कंसेंसस है तो इसको रोकने के लिए कोई इफेक्टिव कदम अभी तक उठता हुआ दिख नहीं रहा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉर ऑल है। देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूं पीआईएल के दो प्रॉब्लम है। जो शुरू हुआ ये 1991 कोalition पॉलिटिक्स में नरसिम्हा राव जी के जमाने से शुरू हुआ कि उनको लगा जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल डिसीजन है हम क्यों ले, कोर्ट पे छोड़ दो। और इसका मोस्ट क्लासिक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, जब अयोध्या में कर सेवक पहुंच गए जी और पीआईएल आया तो मिलन बनर्जी ने, वो बेंच थी वेंकटचलैया के बेंच थी, वेंकटचलैया साहब के बेंच के सामने उन्होंने ये कहा कि आप दी आर्मी इज वेटिंग देयर फॉर योर कमांड। तो उस पे वेंकटचलैया साहब बोले कि द आर्मी इज टू बी कमांडेड बाय द कमांडर, नॉट बाय अस, यू डिसाइड व्हेन टू फायर। ये क्यों? क्योंकि क्या कितना सख्त कदम लेना चाहिए कर सेवकों के खिलाफ सरकार नहीं फैसला करेगी, वो कोर्ट के पीछे छुपना चाह रही थी। और तब से ये एक माइंडसेट ही बन गया, सब कोर्ट में करने दो, सब कोर्ट में करने दो। ये पूरा जो कोल का मसला हुआ है, पूरा कोल का मसला हुआ है। और इंडिया की इतनी रेपुटेशन खराब हुई है कोयले, और वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बिना लोगों को नोटिस दिए, बिना लेसीज का सुन के कोल माइनिंग लीजेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए। कोई अगर सिविल सर्वेंट ये कर देता, कोई माइनिंग डिपार्टमेंट ये कर देता तो उनकी खाट खड़ी कर देता कोर्ट, तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को ये डर लगा 10 में से 7 लोगों को तो ठीक मिला, 3 को वो दाएं बाएं करके मिला। तो अगर पूरे एक्चुअल रिकॉर्ड्स आ गए कोर्ट के पास तो फिर वो 3 फंस जाएंगे। तो कोर्ट को कह दिया भाई हमारे पास कुछ नहीं है, यही है, आपको जो करना है करना। आज की जो सरकार है वो फ्रंट फुट पे है, जिसको कहते हैं, वो कहती है हम सब कुछ करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। तो ये जो शिफ्ट आया है
मिसेस गांधी के जमाने में कभी एक कोर्ट में पीआईएल वीआईएल नहीं होती थी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके सरकार चलाती थी। सही किया, गलत किया, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, उससे फेवरेबल हुए तो इलेक्शन जीते, हड़बड़ हो गए तो इलेक्शन हारे। पर उस तरीके से आज जो है सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि सरकार लोग खुश हैं या ना खुश हैं, पर डिसीजन लेके सरकार तो चल रही है, सरकार चला रहे हैं। ये आपने सलवे साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो माइनिंग के विषय में आपने कहा। तो एक माहौल फिर से तब बन रहा है जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योरल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो एक एंटी एंटरप्रेन्योर और एंटी बिजनेस माहौल खड़ा करने की लगातार कोशिशें हुई हैं। सोशलिस्टिक माइंडसेट था, अभी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें कूद गए हैं और उसको बहुत बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसको कैसे टैकल कर सकती है पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, यही आज सबसे बड़ा फियर है। आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था कि आज लोग भारत को किस तरीके से देखते हैं, इंडिया को किस तरीके से देखते हैं, और मैंने कहा एक नजरिया ही बदल गया लोगों का। पर इसमें उससे आप खुश हैं, ये बात नहीं है। कोई देश खुश नहीं होता कि दूसरा मेरे से आगे निकल गया है जी। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो हमारे सिर के ऊपर बैठा है, चाइना, उनके साथ आज हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस एरिया में उनके इंटरेस्ट में हमेशा ये होगा, इन लोगों के, ये कंट्रीज के, एक कोर्ट्स को यूज किया जाए रोकने के लिए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमेशा चल रहा है। इंडिया में जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते थे, माननीय अब होता है कि नहीं, इंपोर्ट करते थे ये बैटरी वेस्ट जी, और उसमें से हम कॉपर वॉपर निकाल के बनाते थे। पीआईएल की ये देखिए हैजर्डस केमिकल है, इंडिया में कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और भाई इंडिया में ऐसी चलता है हर काम, तो किसी ने केयरफुली देखा तो हो सकते हैं कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हो, कुछ नहीं फॉलो हो रहे हो। कोई एज एन इंडियन हमारा तो वी आर नॉट शॉक्ड। यस, 19-20 चल रहा था। बट आई वाज अपियरिंग फॉर द एसोसिएशन, आई मस्ट स्टार्ट बाय टेलिंग यू, ऑफ द इंडियन इंपोर्टर्स। उनको कागज मिल गया कि यूरोप की काउंसिल में ये डिस्कशन हो रहा था कि अगर भाई इंडिया जैसे देश अगर बैटरी में से कॉपर निकाल के बनाने लगे तो हमारा हम जो इतना कॉपर बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कौन खरीदेगा? और पीआईएल आ गई। आज देखिए जिस किस्म की एक ये नैरेटिव बनाई जा रही है इंडिया के बारे में कि इंडिया की इकोनॉमिक, इस पे तो आज कोई कह नहीं सकता तो डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अरे भाई, तुम ये खड़े होकर बोल रहे हो इंडिया में कि डेमोक्रेसी इज डेड, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव। आज जितने लोग गाली बकते हैं इंडिया में खड़े होके कि सब मर गया, आज आपके मीडिया को सब लोग कहते हैं कि मीडिया में हिम्मत नहीं कुछ लिखने की, और आपके मीडिया पे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं लिखने की और आप लिख रहे हो कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि मीडिया आज बिक गई है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो क्या है? जी, इस पे एक बात याद आई मुझे। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नैरेटिव ये इंडिया से आ। बिल्कुल, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पिकअप किया। ऐसे तो ये रोज का डिस्कशन है, लेकिन आपने पिकअप किया है तो जरूर इसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सोशल मीडिया पे बातें ना करें। इस पर आप सोचते हैं कि आप खुद भी एक पीआईएल लाने की बात कर रहे थे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्वेश्चन मेरा ये है सालवे साहब कि जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक नॉइज और परसेप्शन का फर्क ना पड़ जाए, इंपैक्ट ना पड़ जाए केस मुकदमों पर, ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है और जजेस इस परेशानी से गुजरते हैं। ये तो सोशल मीडिया वाला आपने जोड़ दिया मीडिया के अलावा, इसको जरा एक्सप्लेन करिए। देखिए, अव्वल तो किसी और देश में ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जुडिशरी का काम ऐसा है, वो उस स्पेस में ही नहीं आती जहां डे टू डे इश्यूज पे कंट्रोवर्सी हो। हमारी जुडिशरी आती है क्योंकि ये पीआईएल बाजी चलती रहती है और उसमें हेडलाइन न्यूज छपती रहती है। पर आज सोशल मीडिया जो है, और आई एक्सेप्ट आई एम नाउ 67 years old, maybe I'm on the wrong side of the thinking and my thinking may be out of date, हो सकता है मेरी सोच पुरानी हो गई, पर आज आपने हर इंसान को एक पब्लिशर बना दिया है। ये ट्वीट और ये सब पकड़ा के आप पर्सनली तो लिखते रहो, पर ये जब पीपल ऑफ पावर, पीपल ऑफ अथॉरिटी, जब वो ये मीडिया बाजी शुरू कर देते,
आज मैं देखता हूं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे के बारे में जिस किस्म की फालतू चीजें लिखते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो जजेस के बारे में चीजें लिखते हैं। पार्लियामेंट में जो ये कन्वेंशन है कि आप एक जज के बारे में बात नहीं करोगे, तो उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के बाहर आके गाली गलौज करोगे आप कोर्ट के साथ। और ये जो हमारे एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट, एक जो है ना जिसको कहते हैं, आज जो हमारी वोकैबुलरी है, आज जो हमारी ये भाषा है, ये इतनी श्रिल हो गई है, इतनी नेगेटिव हो गई है। जो एक सिविल सोसाइटी जो आप कहते हो, मैं उसको कहता हूं ये आज हमारी सिविल सोसाइटी नहीं, आज हमारी अनसिविल सोसाइटी। और इन जितनी आप ज्यादा गाली दे सको उतना ज्यादा लोगों को पढ़ने में जी। और दूसरा ये यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, यानी इसमें जो चीज छप गई वो गॉस्पेल। बिल्कुल। चूंकि आपने कर्कश भाषा का जिक्र किया, तो अभी जाहिर है कि एक ये नया मसला आया था कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी कर दी और उस पर उनकी मेंबरशिप गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, बहाल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस के कंटेंट पे या मेरिट पे कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि आपको थोड़ा रिस्ट्रेन करके बात करना चाहिए। इस पर आप कोई राय जरूर रखते होंगे सालवे साहब। तो वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, ये बात इतनी अहम है कि उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी बात है। पर और ये इतनी बदतमीजी से आप बात कर रहे हो, आप लोगों पे झूठे आरोप लगा रहे हो और आप फिर बोलते हो कि मैं पब्लिक लाइफ में हूं और सबको मालूम है, भले कितना भी डिनाई कर लें, कि ये रोज रात को जब सोते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं। तो ये स्टैचर है आपका कि इस किस्म की आप भाषा यूज करो। अब उसका कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये कहा कि देखिए, जो आपने कहा गलत कहा और इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड जानी चाहिए, तब तक कि अपील का फैसला होता है या नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कन्विक्शन स्टे किए, इसलिए नहीं कि मेरिट्स पे उनको लगा कि ये केस में दम। जी, वहां के लोगों के अधिकार के लिए ये बात उन्होंने कही है, जो मैं समझा। जी, एक चीज और आ गई है इस वक्त के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, वो है फ्री बीज का मसला। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और इस पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट राय तो हो नहीं सकती, लेकिन आई एम श्योर कि आप इस पर कुछ पक्की राय जरूर रखते होंगे कि ये बहुत डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। डिस्टॉर्शन नहीं है, ये भी एक किस्म का करप्शन है। आप टैक्स पेयर का पैसा दोनों हाथों से बांटो इलेक्शन जीतने के लिए, इससे ज्यादा घटिया राजनीति हो ही नहीं सकती। इनके डिफेंस में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंडिया वही एक अकेला देश नहीं है जहां ये हो रहा है। ये कई देशों में, यूरोप में आप देखो, ये सोशलिज्म के नाम पे इन्होंने क्या कर करके जो हाल आज बनाए हैं। अगर आज यूरोप इकोनॉमिकली फ्लाउंडर कर रहा है, वेजेस बढ़ा दिए हैं, आपने एम्प्लॉयज को जो टर्म्स दिए हैं अनइकोनॉमिक कर दिया, कोई आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है। जो यूके के साथ हमारे एफटीए की बात हो रही है, उसमें आप क्लोजली इन्वॉल्व हैं और अब शायद वो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होने जा रही है। और इसके अलावा सब लोग आपकी तरफ देखते हैं जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कुलभूषण जाधव, इन लोगों को भारत वापस भेजने की बात होती है। इस पर ज़रूर आप हमको कुछ नई जानकारी दे सकते हैं। नहीं, नीरव मोदी का जहां तक सवाल है, उसका तो एक केस चल रहा है। इनफैक्ट मैं अपीयर हो रहा हूँ भारत सरकार के लिए यहाँ हाई कोर्ट में लंदन में। उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल लिया है हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जाके पूरा इंटरवीन किया और इनकी जो जितने इनके ट्रस्ट हैं, ये इनका पैसा बटोर के वापस लाने की बात चल रही। तो ये एक इम्पोर्टेंट आगे स्टेप हम ले रहे हैं। दिक्कत क्या है, यूनाइटेड किंगडम या किसी भी देश में एक्स्ट्रेडिशन पहला स्टेप तो जुडिशरी में होता है। वो सब मलया का, नीरव मोदी का खत्म हो गया है, फाइल पड़ी है। अब बस एक आखिरी उनको स्टेप लेना है कि हाँ जी, ये सब कानूनी कार्रवाई पूरी हो, आप यहां से जाइए। और उन्होंने कुछ असाइलम का क्लेम किया है, क्या किया भगवान जाने, वो उनकी सीक्रेट प्रोसेस है, वो बाहर नहीं आती। मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो, मेरे जानकारी में तो ये है कि जब भी हाई लेवल मीटिंग होती तो पहली चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि कहाँ है हमारे, व्हाई शुड यूके बिकम द होम फॉर इंडियन फ्यूजिटिव्स। यानी हमारे जो तड़ी पार लोग हैं, हमारे जो कानून से
कानून के खिलाफ इंडिया में जाके आप यूके में जाके छुप जाओगे और आप उनको शह दोगे और फिर कहोगे हमारे साथ फ्री ट्रेड डील साइन करो। तो ये एक इनकंसिस्टेंट पोजीशन है और इंडिया बहुत हार्ड नेगोशिएट कर रहा है एफटीए और सही कर रहा है, क्योंकि एफटीए को हार्ड नेगोशिएट करना चाहिए। आज हमारी पोजीशन ये है कि यूरोप से अलग होके ब्रिटेन को हमारी ज्यादा जरूरत है या जाने और बहुत इनके लिए अहम है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए रादर देन हम ये वो जमाना चाहिए कि हम इनके पीछे भाग रहे हैं। तो आज एक थोड़ी इक्वालिटी से हम बैठ के इनके साथ टेबल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। भारत में बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें, व्यवस्थाएं बड़े पुराने किस्म की हैं और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसमें सीरियस मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। पॉलिटी के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे, जुडिशियल सिस्टम के लेवल पे, रेगुलेशन के लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ों पर बहुत बेचैन होते होंगे। अगर आप टॉप 2-3 आइडियाज़ दें जो लुकिंग फॉरवर्ड एजेंडा सेट करे तो वो क्या होंगे? दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है लुकिंग फॉरवर्ड हमको करनी चाहिए। हमारी जो आज सरकार का एक पॉलिटिकल विजन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार का जो एक पॉलिटिकल विजन है वो एक इंडिया को पॉलिटिकल पावर हाउस बना दिया। आज ग्लोबल डिस्प्यूट में इंडिया की जो अहमियत है, रशिया यूक्रेन में लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई तुम भी कुछ मदद करो, इसका मसला खत्म कराओ। ये कभी नहीं था। आज जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग रिसीव करते हैं, अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये पहले कभी नहीं था। तो एक इंडिया की इमेज बहुत बड़ी हो गई। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस की जो कैपेसिटी है ये बहुत ग्रो की है। ये माइंडसेट सरकार में तो आया है, पर ये माइंडसेट हमारे कुछ सर्विसेज में मेरे को कई जगह लगता है कि गड़बड़ है और वो कैचअप करना उनको चाहिए। एक जगह है, मैं बताऊं, मैं हमेशा ये कहता हूं ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। आज इंडिया पावर हाउस है, इंडिया की करेंसी को आज देख लो कितनी वैल्यू है। ये क्यों लगाया हुई खिटखिट और छोटी छोटी बातें हैं। और आज एक इंडियन ट्रैवल करता है और भी इंडियंस को अगर बाहर घर खरीदना है, इंडियंस को बाहर अगर अपना पैसा खर्चा करना है, टैक्स पेड मनी है, पूरा हिसाब दिया हुआ है, क्यों आप रोक लगाते हो ऐसी छोटी? ये छोटी छोटी बात है, ये बड़ी हो जाती है। ये एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इतना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का फोकस है, पर स्टेट्स के लेवल पे आके ये सब बॉक डाउन हो जाता है। और दूसरा जो एक बहुत मेजर इशू आज सब इंडिया से घबराते हैं वो है इंडिया लिटिगेशन। इंडिया के टैक्स के साथ झगड़ा हो जाए, आपका कोई बैठ के फैसला करने को राजी नहीं। यहाँ के लोगों को झगड़े का मतलब नहीं समझता, सब बैठ के फैसला करते हैं। यहाँ बैठ के फैसला करने को कोई राजी नहीं, और वहां किया तो वहां किसी के साथ अगर आपकी सरकार ने फैसला किया तो उसकी टीआईएल हो जाएगी, वो आ जाएगा प्रेयर कोई ना कोई लेके कि लगाओ इसमें एसआईटी, बीआईटी, एफआईटी, सीआईटी सब लगाओ इसमें। आपने जिक्र किया आर्बिट्रेशन का, तो अब जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट की बात हो रही है, लोकसभा से पास हुआ है इंटरमीडिएशन को लेकर के, अब ऐसा लगता है कि भारत में काफ़ी कुछ बदलेगा। उसका क्या इम्पैक्ट आप होते हुए देखते हैं? देखिए, मेरे को आज अगर कोई इंटरनेशनल पूछेगा कि हम साइन करें क्या कि दिल्ली में सीट हो, मैं कहूँगा ये गलती नहीं करना भैया, क्योंकि आपका सुपरवाइजरी कोर्ट इंडिया हो जाएगा। और कहीं भारत सरकार सामने हो या कोई स्टेट सरकार सामने हो तो कभी नहीं करना, क्योंकि वो हर बात पे कोर्ट में चले जाएंगे और आर्बिट्रेशन को डिले करेंगे। जी, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है और मैं ओपनली पब्लिकली कहता हूँ। जी, तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं आता, आज इंग्लैंड में आज इंग्लैंड यूरोप से शिफ्ट होकर आज लंदन इतना बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों हो गया, सिंगापुर इतना बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों हो गया? वहां के कोर्ट्स में आप चैलेंज करने की कोशिश तो करिए अवार्ड को, क्या दवा के कॉस्ट लगते हैं। आखिरी सवाल, आप लीगल एडवाइस तो फ्री में देते नहीं होंगे, लेकिन आपसे एक ट्रैवल एडवाइस चाहिए जो हमारे दर्शकों के भी बड़ी काम आएगी, क्योंकि आप घूमने के बड़े शौकीन हैं और अभी आप कीनिया से लौटे हैं। तो आपकी लिस्ट में और कौन से देश हैं जहां आप नया डिस्कवर करेंगे, जहां नहीं गए हैं, और कौन से देश हैं जिसको आप रिपीट करने वाले हैं? देखिए, अब काम वाम थोड़ा कम कर दिया, अब घूमने का समय है, तो पूरा लैटिन अमेरिका
है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ जाना है। और अब जो मेरी एक इकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है, जो एक एनवायरनमेंट को देखना, कल्चर्स को देखना, वो अब मैं फुलफिल कर सकता हूँ। और मैं बताऊं, 2 ट्रिप्स मैंने किए हैं। एक जापान गया था, मैं क्योटो गया 3 दिन के लिए, और जो जापानीज लोगों को का कल्चर देखा, जो उनमें डिसिप्लिन है, जो उनमें ह्यूमिलिटी है, ये देख के जो और जो स्पिरिचुअल फीलिंग आती है वहां जाके, तो वो एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। जी बिल्कुल। जापान के बारे में आपने जब जिक्र किया तो आपने एक वर्ड का यूज़ किया, ह्यूमिलिटी। मैं समझता हूं कि मेरी भी एक राय है जापान के बारे में, शायद आप एग्री करेंगे कि एक अच्छा सिटीज़न क्या होता है, एक अच्छा हम्बल इंसान क्या होता है, विजडम क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये चीज़ें, और परफेक्शन क्या होता है, ये जापान बड़े मज़े से सिखाता है। इज़ इट राइट? तो उसमें 2 बातें बताऊंगा संजय। एक तो खाने का शौक है बहुत, तो जापानीज खाने का भी बहुत शौक है मुझे, फ्रेंच खाने का भी बहुत शौक है। बट आई मस्ट टेल यू, सबसे बढ़िया फ्रेंच मील मैंने टोक्यो में खाया है। क्योंकि अगर वो फ्रेंच खाना भी बनाएंगे तो इतने परफेक्शन से बनाएंगे कि वो फ्रेंच लोगों से अच्छा फ्रेंच। जी, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके बाद मैं पब्लिकली आपको इनविटेशन दे ही दूं कि एक बार सिर्फ ट्रैवलिंग पर और खास करके जापान पर एक लंबी बातचीत आपसे फिर की जाएगी। सालवे साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया में कुछ लोग Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं।
The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पेन, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments Across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders. Welcome to the special broadcast on NDTV. I'm Maria Shakil. As Prime Minister Narendra Modi arrived at the Red Fort to address the nation on the occasion of 77th Independence Day, he wore a Rajasthani Bandhet Safa in vibrant colors, making a political statement, as has been the case on earlier occasions too. He must have been deeply aware of placing himself in the echelons of history to be the only non-Congress Prime Minister who has spoken from the ramparts of the Red Fort 10 times, equaling Dr. Manmohan Singh. A shift
from Deshwasiyon to Parivarjano, and a promise to be back next year. Over the next 1 hour, I'm going to decode the big takeaways of Prime Minister Modi's 10th speech from the ramparts of the Red Fort. But first, headlines. A 90-minute speech that sets the tone for 2024, Prime Minister Modi says will be back next 15th August. Country with people of Manipur, says Prime Minister Modi as he begins his speech at the Red Fort. Prime Minister Modi launches a blistering attack against the opposition yet again, says India has to fight corruption, dynasty, and politics of appeasement. And also the big takeaway on the economic march of India. India will be among top 3 economies in 5 years. Independence Day rush at Srinagar Stadium. Government employees attend the Independence Day function. No mobile internet shutdown, no restrictions. It's a Naya Kashmir. Shimla in Himachal Pradesh. In the last 24 hours, over 50 people have been dead. Heavy to very heavy rain. The big shift in the speech was focusing on new middle class, those in Tier 2 and Tier 3 cities, the aspirational India, women as well. He spoke about empowerment, and words like Samarth and Parivar Jan figured maximum number of times in his speech, focusing on taking along those who had been left behind in the journey of development. His attempt was to reach out to those and also put a message directly to the Indian society. It was a speech of accountability, as it was about keeping hope for a better future. And as he said, that he will be back in 2024 to perhaps deliver another speech. Let me bring in my guests now. Neerja Chaudhary is joining me live. We also have Nalini Singh, several veteran journalists. All of them are present with me this morning. We have Shashi Shekhar, former CEO of Prasar Bharati, and also the author of new book, which is Man Ki Baat. Gurcharan Das is joining me as well. Neerja Chaudhary, beginning with you, a speech of aspiration, a speech of trust, and a shift which is visible, which is from Deshwasiyon to Parivarjano. What, according to you, was the big takeaway of Prime Minister's speech today? Look, he was at his most formidable best in terms of energy, futuristic, aspirations, holding out hope, what India will be like in 2047. I mean, a typical Independence Day speech. And but there was the politics of it in the latter half of the speech, preparation for elections, attacking the opposition without, not without really appearing to do so. But what you're saying, Parivar Jano, he played to his strengths. What is, if you go into the field and talk to people at the ground level, people will tell you the things that they like about him is that he's 24/7 Prime Minister and he has no family in tow. So that is an appealing part of Narendra Modi, and he
today played to that gallery, Mere Parivar Jano, after every 2-3 sentences. Yes. You are my family, everything I do is for you, I work for you, I dream for you, etc., etc. So I think that is one of the takeaways. Of course, there are several takeaways, you know, in the sense of zeroing in on these three things. Corruption, dynasty rule, and what is the third one? Very important, appeasement of the minorities. Now, he said appeasement, but today, if I was a minority, I would be worried about what is in store for me in the next 9 months till the election. Yes. And he also set the tone, perhaps, of what he thought was the vision of India. But the role of women in particular, Nalini Singh, let's talk about that. How it has been about women-led development. And that has been the centerpiece of his governance. Maria, certainly I'll come to that. Actually, that's the very favorite line of mine of the speech of the Prime Minister today, when he talked about 2 crore women Lakhpatis. Yes. Women Lakhpatis, yes. In our idiom really means somebody who has resources. And nothing could make me happier than to know that, this proportion of the country and of the country's women are going to be being Lakhpati, which means women of financial substance. They are already of substance. So that was, but let me go back to this, that today the Prime Minister said that the foundation stones that he's laying today, he will be the one who inaugurates those projects. So I think I read in this that the 75-year-old, the cap for leaders at 75 in the BJP, RSS, etc., that's over as far as I'm concerned. The second thing, of course, is, as everybody, the judge has said, that he has pulled in the 140 crore people as family. But what is extremely interesting is that he pulled in the future as a component of today's happiness. So he has said that 2047 is one aim when we will be a developed country, according to the Prime Minister. The second one is the year 3000, because he's talked, or 3023, I should say, he's talked about 1,000 years. And this is very interesting, because he, in this, has said, he went back 1,000 years, and he said that one little mistake, maybe of a fiefdom, maybe of a little, Rajbari or whatever, when the others were able to conquer them, that led to a domino effect, and the country then became a ghulam, became a slave. So he has said that in 2024, don't make that mistake. Don't be, any one of you can actually start this domino effect. And that was, if that's not a pitch for 2024, what is? The other thing that I would just say is that he tried to appear to be a Prime Minister who wants inclusivity and who wants diversity. But the Pasmanda was the only one reference to Muslims, and he made that amongst other deprived sections of society, Dalit and Pichre, OBCs, women, etc., those who are left behind. But I think that this is also very, very clear that that his only reference to the Muslim should be in this context. And you can see how, if I may say, on the surface, the Manipur reference was. Yes, because, Manipur right on top. Yeah. You know, he right mentioned Manipur. I'll take that thought with, Shashi. Shashi, that unequivocal solidarity with people of Manipur, something he touched upon very briefly during his address in Parliament when he was replying to the no confidence motion. But today, he started that speech and said that the center and the state is working in tandem, that people of Manipur should feel that they are very much part of the larger ethos of India. And the fact that he has chosen to speak about it, today, the occasion is such, and also from the ramparts of Red Fort. Absolutely. I think one thing that stands out in the entire speech today is his forthrightness. He was very direct in almost everything that he said, starting with Manipur right at the top.
where he was very clear that events that should not have happened. But we stand with the entire country stands with the people of Manipur, and he was very, very clear in terms of the emphasis of his speech, across the various subjects that even the earlier speakers pointed out. So to me, the speech stands out for both the high energy with which he delivered it and the forthrightness with which he took on issues very directly. He was not, being ambivalent at all. He was not being subtle. He was being very, very direct, be it on dynasty, be it on corruption, be it on, making the right choice, as was rightly pointed out, that, there's a crucial moment in India's history. The choices we make today will not only determine the course for the next 2 decades, but for the next 1,000 years. Yes, and as he spoke and addressed to the aspirational India, he also talked about how this has been a decade of transformation. Gurcharan, really happy to have you on my show. The financial security part, which has been very key to brand Narendra Modi's, policy statement, which is the Prime Minister Kisan, which has been about 2.5 lakh crore disbursement. Then Har Ghar Jal and Jal Jeevan Mission, the safety net which has been provided through Ayushman Bharat. Gurcharan, when Prime Minister Modi talks about his report card, do you think he also sends a message that I'm accountable to my Parivar Jano as much as it was about Deshwasiyon, say, till 9 years? Well, it was, as usual, a very impressive speech. And I'm so glad he repeated the mantra, reform, perform, and transform. But I wish he had gone further and reminded the farmers of India that we still have to do the farm reforms, the farm laws, in order to create a second green revolution. I wish he had done the same with the workers, to tell them we still have to pass the labor codes in order to create an industrial revolution which will create masses of jobs. And this is how India will become a developed country by 2047. And as far as the industrial policy, to get the industrial revolution, we still have to change our mindset. Although we have grown at 7% since 91, which is very impressive, but we have not created the jobs and we have not created an industrial revolution. Now, to do that, we have to stop our export pessimism and push exports. The latest example was last week with this laptop ban, the free imports of laptop ban. So what I'm trying to say is that here was a golden opportunity for him to actually go a little further and sell those reforms that he has been trying to do. And especially, we still need to create employable graduates in education. And education is beset by governance problems. 1 out of 4 school teachers doesn't show up in a government school, and 1 out of 2 who shows up is not teaching. So what do people do? They go to private schools. And private schools are not that much better because there is a license raj in private schools, and good entrepreneurs do not wish to go into that bribery and corruption that exists in private education. So I just feel that I'm so glad that he reminded the country that it was reforms that would, transform the country, but it was a chance to sell the reforms. And I wish he had done done that. Yes, and he has often used, from 2014 onwards, this platform to make big policy statements, almost showcasing the direction for the country and also at the same time talking about his vision. But first, let's listen in to what the Prime Minister had to say in the context of Manipur, and then I go back to the guests. लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं
और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। And the Prime Minister also said that आज भारत global South की आवाज बन रहा है. That emphasis on how the world has changed, how the global order has changed, Nirja, post-COVID. That is also a reminder that the Prime Minister has chosen to give, particularly today. Yes, I mean, the center point of a South global order, new global order. Post-corona is one thing, a counterfoil to China, which parts of the world, that's the way they view India. The new alliances, yes, he pointed to all that. He pointed to his whole theme of being the Vishwa Guru. That's also a very attractive part about him, that young people find that he's taken India to a new high globally. I would say one more thing. Yes. It is the Prime Minister's job on Independence Day to set, an inspirational tone, a future-looking roadmap to hold that out for the whole country. It is also the job of the opposition and to punch holes in it, and the job of experts to say, no, this is what you said, but this is the reality. And therefore, what do you need to do now? So different people today, when they are analyzing the Prime Minister's speech, have different roles to play. And we should not really forget that. And I would say also about Manipur. This time, unlike in Parliament, where he spoke about Manipur 90 minutes into his speech, this time he started his speech with Manipur and with reassuring words to the people of Manipur that the rest of India cared about them and that peace should return and a way out will be found. Now, of course, he could have maybe, given a little more substantive step, pointed to a substantive step, how healing could be brought to Manipur. But anyway, that apart, he did strike those very, as I say, grand notes, which is what he's known for. Everything has to be big and grand. And today was an occasion, Independence Day, when you don't necessarily go into the nitty-gritty of things. You go into the macro strokes, which is what he was striking. Okay. Nirja, Nalini and all the guests, please stay with us. We're slipping into a short break. This analysis will be continuing, so stay with us. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love.
Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Jeff Bezos. Bill Gates probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow!
Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. And Prime Minister Narendra Modi making a promise again that India will be among the top 3 economies of the world very soon. And he has said, remember, during the inauguration of that building in which the G20 leaders meeting will be taking place, he has said it again on the occasion of Independence Day. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा. Shashi, that Modi ka guarantee is a line very familiar that we had heard also before the 2014 elections, where he had said each and every vote that you cast will be for me, not for the BJP. Now he's saying again, going ahead when he seeks the 3rd term, that this is Modi ka guarantee. His choice of words is again about trying to make this a presidential election. He's saying that I'm a man who has delivered for 10 years, and as I seek the 3rd term, I'm making that promise. It is about me and about my promise to you. Yeah, this has always been the case with Prime Minister Modi, that he has always led from the front, and he has, the buck stops with him. And that's very clear with the emphasis throughout the speech today, where he has, not only directly put out the issues, but also put the responsibility on his shoulders that I'm going to deliver. You gave me a mandate in 2014. I reformed. I pursued the reforms. And here is, the performance of the government based on which you re-elected me in 2019. And now I'm promising to transform India. And I think that is the clear message that he has put forth. And very clearly, it is about his commitment, his resolve to deliver on these next 5 years. And that is the confidence with which he sought the mandate today. There are questions around, should he have referred to, the political culture in India? Should he have talked about, dynastic politics and so on? But I think it was very important that he did that today, because in his mind, the choice that the country makes in 2024 is so important for what happens for India's economy, because it's not guaranteed that, India will emerge as the 3rd largest economy by itself on autopilot. It requires a Modi at the helm, and hence the Modi guarantee. Okay. The Modi guarantee aspect, Gurcharan, how do you look at that point of the Prime Minister saying so? And repeating it again and again. I mean, I'm seeing every speech of the Prime Minister, be it inside Parliament or outside, now he has made it about his guarantee, his personal assurance. Well, I believe that democracy should be run by modest men. And that's why my favorite was Lal Bahadur Shastri. But what I do believe, though, is that his promise to transform India is a possibility. And we are in a far better position today to transform it than we were in 1991. One, of course, is the cumulative effect of the reforms of the last 30 years. Second, our infrastructure is really far better. Road mileage has doubled since 2011. Port capacity has quadrupled since that time. We have one country through GST now, and removed the rubbish of octroys, etc., which was coming in the way. We've had a banking revolution. Bank accounts have gone from 44% to like almost 90% people have bank accounts. So all these things,
we have become a global leader in IT. So there's a lot more confidence that we have, and the conditions are better. But it needs reforms. And he has to sell the reforms this time. He can't just, land reform, labor reform, farm reform, all three need to be done to get that transformation done. And so, where I would say is that what Margaret Thatcher and Deng have taught us is that you need to sell the reforms to the people. Yes. They're not self-evident. And I just wish that he'll be able to do that. Okay. So according to you, he did not really sell reforms. Yes, Nalini, you wanted to come in. Corruption, nepotism and appeasement, the three evils that the Prime Minister talked about, of course, without naming the Congress party and the India alliance. He did launch a scathing attack against his political opponents. Yeah. So, Maria, when he talks about corruption, I think that's completely justified, talking about corruption in the other governments before him. But why doesn't he talk about the corruption each time the BJP topples the government using money, a state government? That is very important. Even today, he is a prime minister. He is not the leader of the BJP when he's talking from the ramparts of the Red Fort. So one would expect that. The second thing I want to say is that when he's talking about, I want to go back to Manipur. We cannot just gloss over and say, well, things will, time heals and peace will return. What is the solution? Even a hint of a solution is what I had really hoped for from the Prime Minister. And the third thing is, who is writing his speeches or giving him data? Exports have declined for 6 months running in a row. In June, exports declined 22%. And the Honorable Prime Minister said that they had been increasing. I'm not nitpicking. I'm just saying that, that these are things that also strike people when they're listening to somebody whom they want to trust and whom they want to believe. So these are things that what one needs to mention as journalists, that this is what was either lacking or it was So not Nalini, very let me start wrapping this conversation, and I'm going to begin with you only. What would you have wanted Prime Minister to say? On Manipur, I would have expected him to say how this extremely difficult situation between the Kukis and the Meiteis, etc., how that is going, and the fact that it is spilling over into the Naga mind, into the the territories where the Nagas are, how this is going to be resolved. Okay, a hint of that. Gurcharan, the second. What about you? Well, I would have, mentioned that our key failure has been education. And I would have mentioned that the NEP, this latest new education policy, that actually promises to remove this whole the whole rote learning process that we have been victims of. But that it will need governance, better governance, both in higher education as well as in primary education for us to achieve it. But there are positive signs that could allow us, because to transform the country, we also have to transform the minds of our youths. Yes, and he did talk about aspirational India and how this was about that India trusts its youth. Shashi, what do you think the Prime Minister could have said more? Well, I think, the Independence Day speech is not an easy speech to deliver, right? You're doing it under very tough conditions, and it's not, there's no eye contact with the audience. Given that, environment, to deliver such a high energy, rousing speech, lay out a broad roadmap, talk about the big picture, elevate the conversation, while, being very direct, I think he hit all the checkpoints. What more could he have done? I mean, you could go on. You could talk about every single area, every sector, perhaps. But then, these speeches need to end on a high note, and I think he ended it on a very high note by very confidently saying that I will be back next year, thanks to that mandate.
that you will give me, and I will deliver on the Modi guarantee. Yes. So to me, I think the speech was pretty much hit all the right tones. And it was a full package, according to you, Shashi. A full package. Yes. It was a full package. Neerja, being the woman on the panel, the second woman, let me give you the last word or the final word here. You have written that book, When the Prime Ministers Decide. What do you think made Prime Minister Modi end the way he did today's speech by making it about guarantees and promises? Look, you asked me what additionally he struck high notes, no doubt about it. He had huge energy and passion that we saw, which was marvelous, really. If you were to ask me what more, I would have said, I wish he'd announced that an all-party delegation led by him would go to Manipur to bring about healing and talk to both sides. I wish he would have said, we will increase the allocations on education and health, allocations, up to even 6%, without which India cannot be a developed country in 2047. I wish he would have had some word of reassurance, particularly for the minorities who are feeling beleaguered. Of course, he's been reaching out to Pasmanda Muslims, but a large-hearted note, that everybody is going to be secure. This is a country of equals. That kind of thing I would have. Yes, and also the reach out that has happened to the OBC community again, where he said that in the next Vishwakarma Jayanti, there'll be a new Yojana for the Vishwakarma that will be announced. So I think he has set the pitch for what will be happening, and particularly that OBC pitch in the run-up to 2024, keeping in mind that there are states like Bihar and others that have gone in for census, the caste census, which the BJP certainly believes can topple its caste equations, the arithmetic that it has been carving out so carefully. On our television screens are the visuals of President of India, Draupadi Murmu, at the War Memorial. She can be seen with the Defense Minister, Rajnath Singh, and the three service chiefs as well. I'm going to leave you with these visuals, and we are slipping into a short break. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The Climate Clock
is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पेन, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow!
Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. Because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है। तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief.
That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे हर रोज हर हफ्ते अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! And three-time Grammy Award-winning musician Ricky Cage has released a new instrumental version of the national anthem on the eve of India's Independence Day. It's in fact a 100-member British orchestra which is playing the national anthem. Listen in. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate.
Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Jeff Bezos. Bill Gates probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis.
Minister Narendra Modi from the ramparts of Red Fort has given a clarion call for India to seize the moment which will determine the future of our country for the next 1,000 years. A big announcement from the speech was that on the next Vishwakarma Jayanti, a new scheme, Vishwakarma Yojana, will be launched, keeping in mind the members of the OBC community. Remember, this is coming in the backdrop of what has been happening in the state of Bihar, where the caste census is on. So what will be the political fallout of this big announcement? But first, the headlines. I'm going to decode that with my guests in just a bit. A 90-minute speech that sets the tone for 2024. Prime Minister Modi says he will be back next 15th of August. Country with people of Manipur, says Prime Minister Modi as he begins his speech at the Red Fort. Prime Minister Modi launches a blistering attack against the opposition, says India has to fight corruption, dynasty and politics of appeasement. And India will be among top 3 economies in 5 years. That is the big announcement coming from the Prime Minister yet again. Congress chief attacks center on Independence Day. He says that opposition's voice is being stifled. Kharge, in fact, skipped Red Fort function. Independence Day rush at Srinagar Stadium. Government employees attend the Independence Day function. No mobile internet shutdown, no restrictions. This is Naya Kashmir. In 24 hours, over 50 dead in Himachal Pradesh. And the Met Department is predicting that there will be heavy rainfall till August 18th. So when the Prime Minister makes that pitch for the Vishwakarma Yojana, what will be its political fallout in states that are going to polls immediately and also for the big elections in 2024? Let me bring in my guests again. Neerja Chaudhary is joining me live. We also have Megha Prasad here in the studio and Gurcharan Das. Megha, coming to you first. We have been looking at how the Prime Minister has used this platform for making big policy announcements from 2014 onwards. And now he has set the tone that when the Vishwakarma Jayanti happens, because the members of Vishwakarma, that unit is largely the OBCs. So the new BJP, as we have been talking about and analyzing Megha, has been focusing on the OBC. They understand that this is a crucial constituency. Well, absolutely. I mean, the OBC reach out as far as BJP is concerned, especially since the last year, has been quite massive. And when today, from the ramparts of the Red Fort, the Prime Minister announced as a part of his speech, the scheme that would be allocating, somewhere to the tune of 13,000 to 15,000 crores for people who belong to the community Vishwakarma. They would actually be, barbers and goldsmiths and washermen, those kind of people who would, of course, need the schemes and the helps and the benefit from the government. But Prime Minister now making that commitment, also saying that next month, when the Vishwakarma Jayanti is going to be there, from that time, the scheme will begin. So, of course, we are looking at 3-4 state elections, very crucial for the Bharatiya Janata Party. And then you're looking at 2024. So I think in the run-up to all of this, this makes a lot of sense politically also. And the political point that he made
made. He has just reiterated what he's been saying and what he said in the parliament, what he said in the BJP parliamentary party meet. He said from the Red Fort again today that this country has been in the clutches of three evils for the last 75 years, and that is corruption, that is appeasement politics, that is dynasty politics, and that we need to work really hard to get ourselves rid and this country rid of all of that. Yes, Megha, let's take that thought forward with Neerja. Neerja, the reach out that has happened again to the OBC, of course, we are yet to know what will be the big takeaways or big announcements regarding the OBC reach out with this Vishwakarma Yojana. But why do you think this is being done, and how significant is it, particularly keeping in mind the caste census that is going on in Bihar? It shows that the BJP is worried about the impact of the caste census as an issue. And it could have a ripple effect, not just in Bihar, it could have it in the other North Indian states also. Right. I'll tell you about a conversation I had before the UP elections with one of the senior leaders of the BJP. And I asked about, the Jats moving away from them. He said, no, the Jats will come back, given the Jat-Muslim polarity in Western UP. What we are worried about are the OBCs. That's where our outreach needs to be more effective. So OBCs being 52% of the population, and the party has moved power, they've talked about not just the OBCs, but the most backward, then going down to Mahadalits, the Pasmanda Muslims. So this devolution of power has been taking place. And Mr. Narendra Modi has actually used, he's an OBC himself. So this is a card that they would like to use in the 2024 elections. And certainly this became very clear with the Vishwakarma scheme that he outlined. And we will see it unfold more and more in the coming weeks. And Neerja, I remember very distinctly when the last cabinet reshuffle happened, we were told to look at the OBC presence in the current cabinet and how it is, being dominated by OBC leaders. So do you think increasingly in the new BJP that we keep talking about that has been formed post-2014, the challenges are now about that constituency that is moving away from the larger Hindutva umbrella and breaking it down again into the caste pockets? You're asking me? No, Neerja first, and then I'm coming to you, Gurcharan. Sorry. Yes. Oh, you're asking me? Okay. Yes, Neerja. Yes, there has been this, for the last several decades, the Mandal versus Kamandal. Yes. Mandal being caste empowerment of OBCs, that's what it signifies, affirmative action. And Kamandal is the consolidation of the Hindu communities under that religious umbrella, which the BJP has flagged as an issue. Today under Modi, it's both Mandal and Kamandal, being, he's played both cards quite effectively, in fact. So, but if the Hindu consolidation gets dented, again, by caste consolidation in a state like Bihar, with caste census becoming an issue, that is a warning signal to the BJP. And I think they are going to have several reach out programs. Vishwakarma scheme is only one of them, to ensure that the OBCs and the MBCs stay within the fold. And Gurcharan, your thoughts, particularly keeping in mind the economic milestones that we have seen? Well, what I like about this Vishwakarma thing is it's giving dignity to a certain middle class constituency. It's telling these people in a Brahminical, in a caste society where Brahmins and Kshatriyas have held the day, it's telling them that it's also that you are now part of the middle class. And that notion of bourgeois dignity, there was a lovely book by Deirdre McCloskey, which explained the British Industrial Revolution as the giving of dignity to these working people. And particularly where the elite have really, the white collar elite have enjoyed that status in the last 75 years, it's very important to give this dignity to a larger bunch, auto drivers, kirana walas, and plumbers and barbers and so on.
a very, very important part of economic transformation. And that is the middle class that's at the root of the transformation. Yes, the that emphasis we are talking on those who use their hands, in building India in many ways. Neerja, before I let you go, final word again to the woman on the panel. The OBC aspect has been very prominent in the new BJP that we keep talking about since 2014. And as the Prime Minister ends his second tenure and he has chosen this platform again to make that announcement for and setting the tone for 2024, he has emphasized on that Vishwakarma, that the OBC reach out is again, it may have taken shape in the last 10 years, but that there is lots that has to be done going ahead. There are two aspects, One is the social aspect, that today you will find people wanting to carry names that connote OBC or Dalit, because they have the benefit of reservation and the benefit in the system and what it has to offer. That is huge change from the time that the upper caste used to shun the lower caste. So that social transformation has happened because of affirmative action, and Mandal has played a very important role in that. But certainly the OBCs are probably the largest group that the BJP is going to target in 2024. By the sheer size of their numbers, that is one part of the story, and also because they have managed to get the OBCs on their side, chunks of the OBCs, and the Prime Minister himself is an OBC. Yes, that's right. I mean, he emphasizes on that, and the entire party also does that. Neerja and Gurcharan, really appreciate your time. Thank you so much. And right at the beginning of his speech, he spoke about Manipur, the situation there, and how he feels that there is a need to express solidarity with the people of Manipur, and that the center and the state are working together. Let's listen into that, and we are slipping into a short break. लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। In the India 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything.
A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा. और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य
आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. Business news can sound incomprehensible, unnerving, unrelatable. But how does it impact you? We deconstruct complex business news and ideas by talking directly to the leaders who shape the economy. We are serious about business. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The climate clock is ticking, but we're just in time. This Independence Day, watch Jai Jawan with me, Kiara Advani, only on NDTV. Wow! We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai.
टेक्निकल गुरुजी। टेक गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं संजय पुगलिया। आज़ादी की सालगिरह पर एक खास स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनमें हम बहुत चुने हुए लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी नज़र में ये आज़ादी की सालगिरह उनको कैसी दिखती है और आगे की रूपरेखा उनकी नज़र में क्या है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और वो बहुत अचाल और एग्रेसिव और मुखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इंडिविजुअल लाइफ में कितने सौम्य और सरल किस्म के आदमी हैं। ये बातें मैं आपको बताऊंगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला हिमंता, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू होगा कि आपका एक फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेकर के, और हम लोग पैट्रोनाइजिंग ढंग से बोलते रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल करेंगे, डिकेड से सुनते आए, जब से जर्नलिज्म शुरू किया तब से। शायद गलती हमारी भी है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, इमोशनल हो चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी का हो, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से हम गुजरे, कौन से साइन पोस्ट्स आप देखते हैं जिससे हम जहां आज पहुंचे हैं वहां हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल येट वेरी पोटेंट एंड रिसोर्सफुल जियोग्राफी है भारत का। बहुत सारे कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का आइडेंटिटी भी होता है कि हमारा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। देन वी इन्वोक आवर स्टेट आइडेंटिटी, देन वी ऑल्सो इन्वोक्ड आवर इमोशनल आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कभी कभी हम हमारा बीच में लड़ते हूँ, कभी कभी वी फाइट विद द हुएवर इज इन पावर इन दिल्ली, एंड येट आप जब दिल्ली का लोग, मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलोर का लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, हम बहुत ही हॉस्पिटलिटी से उनको स्वागत भी करता हूँ। तो थोड़ा विविधता है, लेकिन धीरे धीरे जब से नॉर्थ ईस्ट का लोग बाहर, मतलब व्हेन आई से बाहर, आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, काफ़ी सारे यंग पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का बाहर काम करने आए, और वहाँ में उनका एक अच्छा खासा इनकम हुआ, सेटलमेंट हुआ, एस्टाब्लिश हुआ, काफ़ी सारे गैप रिमूव होने स्टार्ट हो गया है। कुल मिला के मेरा डिस्ट्रिक्ट से सिंस 2010, 14, 16, in last decades, the conflict with the mainland has come down significantly. Right. इस सरकार में खास बात ये हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है? जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है? क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014, कि इसलिए 2014 का पहले मैं नहीं बोलूँगा काम नहीं हुआ था, बट काम वही स्पीड से होता था कि कोई चीफ मिनिस्टर आए, यहाँ कैंप करे, पर्टिकुलर रास्ता का सिक्योरिटी लेके जाए, कोई बड़ा मंत्री एमपी यहाँ आके सालों बात करे, कोई एक रेलवे ट्रैक का सिक्योरिटी लेके जाए। डेवलपमेंट वाज एट वेरी स्लो पेस। फ्रॉम 2014 सडनली एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम चाइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। सडनली ऑल मीटर गॉज हैड कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज। एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज़ इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। सो इट बिकम सो मच बिजिएस्ट एयरपोर्ट, इंडियाज़ 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया। उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ।
हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से एक ह्यूज परसेप्शनल चेंजेस हैपन इन नॉर्थ ईस्ट दैट समबडी इज caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. Her state capital Rajdhani Express se jode, that was our legitimate expectation, but वो काम नहीं होता था। मैं नहीं बोला कि bit by bit काम नहीं बना, अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है। कोई बड़ा एक व्यक्ति एमपी बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रूल हुआ, लेकिन नाउ इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज द रीजन हैज बिकम फोकस। उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप भी बोलते हैं अभी डिस्टर्बेंस है। आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, बट नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कुछ भी हो जाता था, द ब्लेम वुड हैव कम टू दिल्ली। नाउ पीपल नो दैट दिस इज आवर कॉन्फ्लिक्ट, नथिंग टू डू विद दिल्ली। सो आप आज मई से ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में, एंड यू विल सी the politician from mainland is criticizing Narendra Modi, but nobody from Manipur is blaming Narendra Modi. आप जो कह रहे हैं वो फाइन फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, न सिर्फ मणिपुर या पूरे इलाके के लोग, ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली ने किया। नहीं, अभी दे लुक दिल्ली विथ ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। लोगों का मन में यही है कि हमने हमारा बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके जो एक दिल्ली को हमने स्पेस देना चाहिए था, दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। सो रादर मेनी पीपल आर लिटिल बिट डिफेंसिव। तो ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जब लोग डिफेंसिव हैं, लोगों में सोचने में बदलाव है कि हम हर वक्त दिल्ली को ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे में ये जो संकट है, क्राइसिस है, जहाँ पहुँच गया है, ब्लेम गेम को बिल्कुल छोड़ दें। तो भी सॉल्व करने के लिए आप प्रपोज क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ हम कम सुन रहे हैं, हम एनालिसिस सुन रहे हैं, प्रपोजल टू सॉल्व क्या है? हमारे जो, जैसे मैं शुरुआत में बोला, वी लिव पीसफुली, बट हमारे जो ट्राइबल इलाका है और मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, देयर आर वेरी वेरी डीप रूटेड इश्यूज एग्जिस्ट। क्या आप सोच भी सकता है कि एक कम्युनिटी, आप यू आर ए पीपल ऑफ मणिपुर, बट अभी आप मणिपुर का ही 2/3 हिस्सा में आप लैंड नहीं खरीद सकते हो, लेकिन जो 2/3 हिस्से में है, दे कैन परचेज लैंड इन एंटायर स्टेट। देयर आर इश्यूज। आप जो कांग्रेस का समय से उसका पहले हमारे जैसे आप भारत में स्टेट बने, उत्तराखंड बने, झारखंड बने, छत्तीसगढ़ बने, मध्य प्रदेश सरकार भी जानते हैं कि मेरा सीमा कहाँ है, छत्तीसगढ़ भी जानते हैं मेरा सीमा कहाँ है, उत्तराखंड जानते हैं मेरा सीमा है कहाँ है, यूपी जानते हैं मेरा सीमा कहाँ है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ असम का सीमा कहाँ है, मिजोरम का सीमा कहाँ है। मैं नहीं जानता हूँ कि अरुणाचल का सीमा कहाँ है, अरुणाचल नहीं जानता है कि मेरा सीमा कहाँ है। स्टेट वेर कार्व आउट फ्रॉम असम, पीपल ऑफ असम हैज नेवर रेज एनी ऑब्जेक्शन। आप उसी समय एक सीमा यू कुड हैव ड्रॉन कि दिस विल बी द लाइन एंड वही हमारा सीमा होगा, ये नया राज्य का ये सीमा होगा, लेकिन जानबूझ के वो सीमा अंकन नहीं किया गया। सो वी आर फाइटिंग टुडे because now after 50 years, जानबूझ के नहीं किया गया या एडहॉक तरीके से कि करने के लिए स्टेट बना दो और गवर्नेंस भूल गए। Why people of North East were angry with the Delhi? Because हमारा वहाँ परसेप्शन है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया। Okay. इसीलिए दिल्ली का ऊपर और whoever was in power in Delhi, we remain angry. हमारा लगता है कि हमारे बीच लड़वाने का जो व्यवस्था आप ही लोग करके गया।
Otherwise, we call ourselves at seven sisters. तो ये एक लिंगरिंग प्रॉब्लम है। अब आप लोग इसको कैसे फिक्स करने का सोच रहे हैं कि सीमाएं पक्की हो जाएं? नहीं, it will take time. अभी धीरे धीरे 2014 से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए एक हीलिंग टच लेके आया कि ऑल राउंड डेवलपमेंट. टुडे यू गो टू गुवाहाटी, इफ यू हैव विजिटेड 20 years back, you will not see the same city. If you will go to any part of northeast, it is not the same geography now. Change has taken place. मैं आपको और थोड़ा पहले का एक कहानी बताता हूँ. थोड़ा दिन पहले इंडियन आर्मी का कोई जवानों ने फायर खोला एक ओटिंग नाम में नागालैंड का स्थान में. कोई लोग मारे गए इन द फायरिंग. अगर पहले आर्मी का फायरिंग में जो भी कारण में अगर कोई कम्युनिटी का लोग मरे, कम से कम 1 साल वो जगह अशांत रहता था. Huge procession, thousands of people would have been on road, burning of shops, anything. जो आर्मी का साथ झगड़ा है, it would have come to the Indian. धीरे धीरे वही काम शुरू हो जाता था मारवाड़ी लोगों का ऊपर, हिंदी भाषी लोगों का ऊपर. People started seeing reflection of army on those people and would have started the same kind of anger and revengeful attitude against them. That was our history. Rightly, wrongly, that was our painful history. But abhi etna bada कांड हुआ, nobody blame Indian army. They said that we want action against the particular person of Indian army, not against Indian army. We have nothing to do with the central government. I know that Modi ji has not ordered us, but this is a wrong done by these few people. Let court martial happens against these few people. So that perceptual changes happen. अभी भी जो मणिपुर का conflict है, you need to give healing touch. There are so many issues. The Meitei people are demanding tribal status. Kuki people say no, we cannot give. Meitei people are saying that we need equal land rights. Then other people are objecting. Then Meitei people are saying that no, you cannot give shelter to the Kukis from Myanmar. Kuki is saying no, they are our brothers, they are coming here as a refugee, we need to look after them. Meitei is saying that demography is changing. Kuki is saying no, it is the same demography because the India and Myanmar is a new creation. We were together in this geography from thousands of years. So there are so many. It's very complex. Very complex micro level issue, and it is keep coming back. 1993, you have seen almost 2,000 people got killed out of that conflict. And from 93 to 2023, in last 20 years, except that few years post 2016, there was no permanent peace between the communities in Manipur. So there are long legal reason, constitutional reason, ethnic reason, cultural reason, and you just cannot solve it like that. Yeah. So how do you propose to solve as the immediate healing touch? I think the situation has improved in last 2 months. There is no major incident happening. The viral video has shocked the conscience of the nation, but that video was little bit predated. I mean, it was not of the current happening. It happened 45 days back. But as of now, Manipur situation has improved. One situation improved from law and order point of view. We need to start official discussion with the communities. Today, everybody is talking to Government of India, but they are not talking to each other. So we need to go to the next step. But the way Delhi people, some people are in Delhi saying that one visit of one person will resolve, one statement will resolve. It is not that easy thing. That only expose that how much they are not unaware or they are not know of the situation happening in the northeast. Right. ऐसे तो आप असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेसिकली अब हम लोग कैसे देखते हैं कि ये जो पूरा 25 सीट है, तो अब आप उसके डिफेक्टो
लीडर या इंचार्ज हैं और आपको वो डिलीवर करना है, आप स्टेटमेंट भी दे रहे हैं इस बारे में। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि असम की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिक्स साइड में आपने जो इश्यूज पिक किए हैं या उसको जैसे फ्रेम किया है, मैटरनल हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन एक दूसरा क्रिटिक ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से, सिग्निफिकेंट ढंग से, आइडियोलॉजिकल तरीके से आप इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। आप इस कमेंट्री पर कैसे रिएक्ट करते हैं? एक लोगों का परसेप्शन बनता है कुछ कुछ बात बोलने का कारण, बट मेरा जो टेस्ट है वो टेस्ट हाउ आई एम गवर्निंग असम। आज अगर आप असम में जाते हो, असम इज ए स्टेट वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग पीसफुली। ड्यूरिंग द कांग्रेस regime, when I was also minister, because of the wrong policy, कम से कम every 5 years or 4 years there was a communal conflict and huge bloodshed. So from 2014, Assam is completely peaceful. एक एक करके जनजातीय विद्रोही संगठन मेन स्ट्रीम में आ रहा है। हिंदू एंड मुस्लिम इज़ लिविंग पीसफुली। और आप जान के आश्चर्य होगा, जब मैं दिल्ली में बोलता हूँ मदरसा बंद कीजिए, मुसलमान बेटा बेटियों को डॉक्टर बनना है, टुडे यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो इन असम आउट ऑफ 1200 मेडिकल सीट 380 मेडिकल सीट गोज टू द मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स। जो मैं बोल रहा हूँ बाहर में लोग बोलता है इट इज़ ए कम्युनल स्टेटमेंट, बट इन असम दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। सारे मुस्लिम बेटियों को अभी आप स्कूल में देखेगा। We are next month I am going to inaugurate 7 colleges only for the Muslim बेटियों के लिए। So huge expansion is happening। तो आपकी बात को हम लोग तो पॉलिटिक्स और इलेक्शन देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं यूँ इंटरप्रेट करूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आसाम से बीजेपी का मुसलमानों का वोट शेयर सबसे ज़्यादा डिलीवर करेंगे आप? अभी वोट नहीं चाहिए। मेरा एक प्रोनाउंस स्टैंड है कि अभी हमें मुसलमान लोगों का, खास करके जो बंगाली मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं चाहिए। किसी सारे जो प्रॉब्लम हुआ वोट के लिए हुआ। कांग्रेस को वोट चाहिए था, इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, उनमें रोड नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी लेके नहीं गया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, कोई घर नहीं दिया, कोई आपको जो भी प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया, घर घर बिजली बाती लेके नहीं गया। आई हैव टेकन ए प्रिंसिपल स्टैंड कि देखो मुझको वोट नहीं चाहिए, मुझको अभी नेक्स्ट 10 इयर्स आपका इलाका में डेवलपमेंट करना है, आपका यहाँ में चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, आपका इलाका में मुझको ये इंश्योर करना है कि लोग मदरसा ना जाए, लोग मेडिकल कॉलेज जाए, लोगों को मुझको ये इंश्योर करना है कि हर मुसलमान गर्ल्स गोज टू स्कूल एंड कंटिन्यू अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो 10-15 साल मुझको ये काम करना है, फिर जाके मैं वोट मांगूंगा। अभी वोट का जरूरत नहीं है, बिकॉज वोट मांगने से ही वो एक लेना देना जैसा हो जाएगा। आप नहीं बनाना। तो मैंने अभी इसको ट्रांजैक्शनल नहीं बनाना चाहता हूँ। तो 2016 इलेक्शन में, 2020 इलेक्शन में मैंने स्टैंड लिया कि आपका इलाका में हम कैंपेन के लिए नहीं जाऊंगा। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, आज से हम आपका वहां नहीं आऊंगा, फिर चुनाव जीतने का बाद आऊंगा। एंड इस बार भी मैं लोकसभा चुनाव का पहले मैं ही बोल रहा हूं कि आप लोग जिसको भी वोट देना है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बीजेपी आपका वहाँ कैंपेन के लिए भी नहीं जाएगा, लेकिन आप मुझे काम करने का मौका दो। लेकिन आप जब इमोशनल कनेक्शन की बात अभी कर रहे थे नेशनल संदर्भ में, तो वो इमोशनल कनेक्शन वोट ले ना ले फिर भी बनाना चाहिए और आपको जाना चाहिए कैंपेन के लिए। देखिए, कैंपेन में नहीं जाना चाहिए, बाकी समय जाइए। वो खाली 21 दिन ही मत जाइए ना, यू डोंट गो दैट 21 डेज, वो समय कांग्रेस को दे दीजिए। किसे लेट देम रियलाइज दैट कांग्रेस और मेरा संबंध वोट का है और बीजेपी और मेरा संबंध वोट से ऊपर है। तो
मैं उसी ढंग से, बट दिस इज ए वेरी पॉजिटिव वे मैं कर रहा हूँ। मैं हर महीना में कोई ना कोई मुस्लिम ज़िले में जाता हूँ, कोई मुस्लिम इलाका में जाता हूँ, सबका साथ मिलता हूँ। अभी 15 दिन पहले उनका ही एक इलाका में बहुत बड़ा एक ब्रिज का उद्घाटन था, वहाँ में भी मैंने किया। हर जगह में जाता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स और वोट का बात नहीं करता हूँ। इंटरेस्टिंग है आपका तरीका काम करने का। मैंने कोशिश की, बहुत अच्छी बातें हुई और आपने बहुत डिटेल में बताया कि हम लोग कुछ खास तरह की पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर इंटरव्यूज़ एंकर लोग ही डोमिनेट करवा देते हैं खास आदमी और एक खास पार्टी के बारे में बात करने के लिए। लेकिन एक मैंने बहुत अजीब सा स्टेटमेंट देखा जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कल ही हुआ ये। आपके पुराने दोस्त जयराम रमेश ने 2 लोगों को पापी कहा, एक हितेश्वर सैकिया को और एक गोगोई साहब को। मुझे लगता है इस पर आपके कुछ कमेंट्स जरूर होंगे। देखिए, एक बात है, जब मैं कांग्रेस में रहा, जयराम रमेश was never kind to me and I was also not kind to him. Very candid. तो मैंने उनका घर में कभी नहीं आया, और जब वो असम में जाता था तो मैं उनको कभी रिसीव नहीं किया, although I was a small political worker, because मेरा पहला दिन से वो लोगों उनसे मेरा वाइब अच्छा नहीं लगा। क्या प्रॉब्लम है आपको जयराम से? प्रॉब्लम यही है कि यूटोपियन है, आप भी खुद राज्यसभा में आते हैं और आप भी पॉपुलर लीडर को गाली देते हो। आप आज सोचिए, अगर जयराम रमेश जी मेरा ऊपर टिप्पणी करता है और मेरे जैसा लोगों को आप बोलते हैं कि देखो ही इज दैट, ही इज दिस, will people of Assam will appreciate him? How they are disconnected? उन्होंने क्या सिन का पाप किया कि आपको मौका दिया? देखिए, उन्होंने मुझको मौका नहीं दिया। मैंने गोगोई साहब को जिंदा रहने से भी, जिंदा जब था, मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि मैं आपका सिंपैथी के लिए यहाँ नहीं हूँ, मेरा अपना जमीन है। बिल्कुल। हितेश्वर सैकिया जी मुझको कांग्रेस नहीं लाया, मैंने पूरा असम का स्टूडेंट्स कम्युनिटी को उनका रिक्वेस्ट में कांग्रेस का साथ वो समय जुड़वाया। उसके लिए आई बिकम टारगेट ऑफ अल्फा एंड आई सेव माई लाइफ, और डेस्टिनी हैज सेव माई लाइफ एटलीस्ट इन 3 क्लोज एनकाउंटर। तो इस व्यक्ति का कोई ये नहीं है। जब हितेश्वर सैकिया जी से मैं मिला था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज द 3 टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द असम बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कांग्रेस ने, मैं पहला दिन से ही कांग्रेस को बोला, देखो आपने मुझको कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बहुत दिया जी। तो मैं ये बात को कभी नहीं मानता हूं कि गांधी फैमिली हमें कुछ देता है। मैं हमेशा मानता हूं कि हमारा खून से गांधी फैमिली बना है। बिल्कुल। लोग जो बोलता है ना कि इसको राहुल जी ने इतना दे दिया, राजीव जी ने इतना दे दिया, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इट वाज अ स्ट्रीट सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो खून देते हैं और आप दिल्ली में बैठ के आप राज करते हैं। इट इज ए रादर रिवर्स रिलेशन। तो ये जयराम रमेश जैसा लोग, वो लोग दरबारी है, और दरबारी लोग ये हकीकत नहीं जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। आपने कहा राज्यसभा, आपने कहा दरबारी। आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा और दरबारी टाइप लोग अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को मिसलीड भी कर सकते हैं पूरा। ये एक, इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलता है कि एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल पीपल, कि जयशंकर जी हो जाए, निर्मला सीतारमन जी हो जाए, फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्सेप्ट द फ्यू पीपल who because of their domain knowledge लोकसभा नहीं लड़ सकते, उनको देश को अलग से ज़रूरत है बिकॉज ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट नॉलेज, जिसको हम लोग रादर पॉलिटिक्स में बुलाता हूँ कि आप लोग आइए, एंड दे कम टू पॉलिटिक्स सेक्रीफाइसिंग देयर नॉर्मल पर्सनल रादर बूमिंग कैरियर। टुडे आई कैन से दैट अबाउट निर्मला सीतारमन, जयशंकर जी। ये एक क्लास है।